Hello, ma'am. Yes, Hello. please tell me. Divya is asking on group that for B1 batch, what is the link? Who is guide for B1 batch? Mentor, I think Sai sir is there, right? Sainath Sizer is Patil. there, yes. Yes. So Sai sir will arrange meeting for them. Maybe sir will busy with some other subject. So in this week, sir will going to arrange a meeting for B1 batch. Okay. Sibin, are you there? Okay. Sibin, Tejas, Yes, unmute ma'am. yourself. uh, Tejas, you got it, na? What madam told you just now? नाही ते दिव्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती विचारत होती म्हणून ते तिला सांगायला म्हणजे तसं हा नाही चालेल ना, सांग ना, काहीच इश्यू नाही म्हणत. हा. फक्त ही जी आता मिनी प्रोजेक्ट आता चालू आहे मीटिंग ही फक्त B4 आणि B2 साठी आहे ना. Yes, yes, yes. थँक्यू सर. Okay, so I'm just sharing the screen. You just tell me whether you can able to see it or not. Can you see the screen? Yes, sir. It is visible. You can start. Okay, okay. See now, all of you, that I'm just telling you that we are doing the project in Java, right? So the mini project is it in Java, and I think in the last lecture I have just told you about some of the technologies what we want to do it. The technologies like JSP and Solid, right? So these are the two kinds of things that we have to think on it, right? And this is going to help us to do us make our project successfully, right, within the stipulated time, right? And I have just gone through the different kinds of projects. There people are they want to use like swing and applet kind of technologies to design their project, right? Obviously, for both the things, you are going to use the concept called as JDBC. So because you are going to store the data in database, right? So it makes sense that we are going to use JDBC. So you use either you go for Swing or Applet, or you go for JSP and Solid, right? Both the sites we are going to use the JDBC, right? Now the part of it is like this, that if you do the project in Swing and Applet, right? What happen? This Applet and Swing. Again, I will talk about the Pojo programming, right? So last time I talked to you about the Pojo programming. What is Pojo? Plain old Java objects. So this is nothing but our core Java, right? Core Java को ही इंडस्ट्री में क्या बोला जाता है? Pojo programming, right? That we have, we know it. Okay. Now once you are doing the Pojo programming, there are two types of programming that is there in our core Java. One is something called application level. Now application programming you are learning, like you are learning data types, then switch case, if else statements, then interface, then inheritance, then abstract class, final class, so on and so forth. So this is the application based programming. So this is something called as CUI, console user interface. That means DOS prompt. That means in short DOS prompt, console user interface. Now there is one more programming in core Java that is called as applet. Now is applet is nothing but a GUI. GUI means graphical user interface, right? So graphical user interface is again very important. Okay, so once you talk about these two things, like the application programming and applet programming, right? So two things were there in core Java. Generally for developing commercial applications, this application based programming, right, it has been used, right? Whereas for animation purpose, for animation, for web related something, not only for web animation, or let's say animation, for animation you use the applet part. So applet part is generally used for the animation, right? So now what happened, whatever component, and this is the architecture called as component container architecture, right? Component container architecture, right? This architecture you must
No, everybody should must know because everybody is interacting with GUI. Whether you use any kind of GUI, any kind of GUI, OS का ले लो, web का ले लो, कौन सा भी ले लो, the architecture, which architecture is being used? So बोलने का component container architecture. Now what is the meaning of this? Is a screen. This is a screen, right? Now this screen is nothing but a container. This screen is nothing but a container. So what you put? You put the components on it. You put component. Let's think about the login form. So let's say I'm having two text boxes, two labels, and two buttons, right? What is this? This is nothing but a components. These are the components. How many components are there? One, two, three, four, five, six. So six components. And how many containers is there? Only one container. Now let's say if I submit this, then I can able to see the new welcome page. So this is a new container. Now what it again consists of? It consists of what? Components. So that means everything is what? The component container architecture. Right? It makes a sense. Why? Let's think about this desktop. What is this desktop? This desktop is nothing but a container, right? Inside a container, what are these? These are the components, right? We are having a screen, we are having the system tray, we are having these icons, we are having this thing, right? The another thing we are having, we can able to open this particular software. What is this? This is something called as the components present on the container. So component container architecture. So once you know this container um, component container architecture, right? Then what happened? The applet was there in core our core Java, right? And wherein whatever components you are visualizing on the container, these components are heavyweight components. Heavyweight components. So what is the meaning of heavyweight components? That means if I load the applet, on the web page, it takes a lot of time. It takes a lot of time to just load the page. That's why it requires the more memory. That's why these components are called as heavyweight components, right? So guys, you make sense, right? So these are the heavyweight components. Means it takes a lot of time to load on the web page, to load on or to just copy paste into the RAM. It takes a lot of time. That's why this is called as the heavyweight components. So what happens? The applet people were using only for the animation, and still let's say if I put the animation on the web page, right, still it took a lot of time, right, to load it. So people were not comfortable with the applet. So what people thought, people or the Java came up with the technology called as swing. Swing is in advanced Java, right? Advanced Java, right? Now again, if you think that I have told you, right, that there are something like J2AC, Java 2 Standard Edition. Now, once you talk about the standard edition, what you are having? You are having core Java, then you are having advanced Java in AC only. And in advanced Java, what you have? In advanced Java, you are having Swing, then you are having JDBC, then you are having networking, right? This type of things were there in advanced Java. So this becomes your AC, standard edition, right? So at least this much part that you should know. And there is something called as RMI. So networking में ये सब आता है. RMI, remote method invocation. How can you remotely access the method, so on and so forth. So all these concepts are there in J2AC. Now there is something called as J2EE, right? In J2EE means enterprise edition. Enterprise edition. What you have? You have a very important thing called as web technology. Once you are talking about the web technology, you are going to have the web page, right? You are going to have the client side programming, then server side programming, then you will have the server to keep all the files, then database, so on and so forth, right? So once you are talking about Java technology, web technology, then you are talking about something called as JSP, Java server page. And what you have? You are having something called as servlet.
which is a server side programming, right? Obviously, both are the server side programming. Who is going to keep this server side programming and everything? Already I have told you, but again I will cover it in this particular class, right? So I think you got it up till this now that what we are having. So in advanced Java, Swing was there, and Swing is having the lightweight components. Right now, I think you come to know, what is lightweight components, right? So Swing is having the lightweight component means what? It takes a less time to load inside the memory, and obviously, if we design our project using Swing, then what happens? It runs quickly. It runs very fast instead of applet. So applet, right, applet was not going to be used at all in the market, right? The people were using Swing, right? Now Swing is having you can able to design many of the GUIs again, which is a desktop applications. Consider this is something or a desktop application, never being used for the network application or web technology, internet technology. So these desktop applications, you need to have something called as Swing. And you know why people were using Java first of all? Because Java is so much secure language, so much secure language. That security feature and everything that already we have studied this, but again we will see it. For desktop applications, Swing are being used. Obviously, you connect it to database and everything, whatever is there, but it's a desktop application. Now let's think about the I want to design something like network like application. So we will have one client, one server. We will have multiple clients with multiple servers like this. So anybody can talk to anybody. So consider like you are designing our chat server, right? Chat server. So what you have? You require the Swing to design the GUI, right? Then you require something called a JDBC, right? To store the messages inside the database. It's optional for you. Let's say if you want to make a chat server, and what you are having something called as socket programming. So this socket programming is also a part of J2AC. Once I am talking about the networking, the socket program is important. So it's a mandatory task for you. You have to do the socket programming, right? Socket means what? You have having the client socket, server socket. Then the socket will talk. Then you will have the half duplex. One direction only you can talk. Then there will be a full duplex. Both ways you can able to talk. And there will be the multiplex. Multiplex, or you can say the broadcast and multiplex. All type of chat servers. Full-fledged chat server you can able to use it. You can able to develop using Swing, socket, JDBC, and this type of technology. What happens, once you design this, then you will say why we require then JSP and everything, because we can do it using this socket programming and Swing is also. What happens, to design a GUI, to design the GUI, only GUI, not a business logic. Now let's say I want to design the login form. So what I will require the two text box. Here I will say label, enter the username, enter the password, and I will have the submit button and reset button. And let's say I am having the title also. This is login form like this. Okay. So let's say if I want to design this login form on a container, I require a lot of programming. I require a lot of programming in Swing. In Swing. So it takes a lot of time for me to design this. So what happened, there are some different kinds of different kinds of what you can say the GUI builder like wizard. Let's say there is one wizard called as J builder. उसमें क्या है, उसमें अगर ये सॉफ्टवेयर आपके पास रहेगा, what you can do it, you can just drag and drop all these tools and you will have the GUI element. So you may say कि sir we can use this also. Yes, you can also use this thing, but ultimately again inside that you are having to design the lot of programming into it ना. जावा का दूसरा भी प्रोग्रामिंग करने का ही है आपको. So that is not database connected and everything is not going to take it automatically over here. UI designing is fine. You can design using all these NetBeans and JBuilder and all other different kinds of big editors. But ultimately you are going to do everything. And you can say this is not going to be have the responsiveness.
That what is the meaning of responsiveness, right? We are doing this in bootstrap programming, right? In web page, whatever GUI you are looking, you look at the GUI, the same GUI you may not found it in your on your mobile, same GUI you may not found it in a tablet. तो टैबलेट का अलग GUI है, राइट? मोबाइल का स्ट्रक्चर अलग है, उसका डिवाइस विड्थ हाइट अलग है, डेस्कटॉप का विड्थ हाइट अलग है, लैपटॉप का विड्थ हाइट अलग है, so whatever you are doing it in a string, that programming also you have to include it. You have to program for it. How you can able to have the device, interaction. Suppose I want this login form at the center, so I have to write a program for it. You know, whereas that responsiveness I will get better in my simple web programming. Simple web programming using HTML5 and CSS3. I get it very quickly, right? And that's why I suggest from my side. So whatever projects you are doing, you stick with the web technology. So you have to go for the JSP as well as Servlet. These two things that you should require, right? So I think you got it. Why you do not stick with the suite, right? You may go for, I am saying again, I'm repeating that Swing is the best technology. But what about, to code, to write a program into Swing and to manage components and their responsiveness and the things are everything are, they are very different thing. For example, if I want to deploy this Swing project on a mobile, you can able to deploy it. You can create a war file or jar file. Jar file, you everybody knows, jar file means Java archive files. पूरा प्रोजेक्ट का आप लोग जार फाइल बना सकते हैं, राइट? वेब का हम लोग वार फाइल बना सकते हैं, वेब आर्काइव फाइल्स, राइट? और ईजेबी प्रोजेक्ट का आर फाइल, EAR, ईजेबी आर्काइव फाइल्स. So these archive files you can able to build it and you can able to deploy it on the mobile or tablet or anywhere, right? वो डिप्लॉय करना पड़ता है, डिप्लॉय करने के बाद में ही आपको प्रोजेक्ट रन होता है, राइट? But in case of web, it is not necessary. I required at the client side, I required only browser. That's it. I hit the request, and that request goes to the server side, and from server side I get whatever I want to get, right? So that makes sense. Why we are going to for the web technology. For Swing, clients का client socket and server socket. Client socket install तो करना पड़ेगा ना at the client side. How the client will get communicated with the server, right? You have to install your component, whatever you have done your program at the client side as well, right? वो loading time ज़्यादा जाएगा, बाद में वो testing के लिए ज़्यादा time जाएगा, right? It should get tested in a network, in a LAN, then WAN, then internet, then intranet. So many things, and हर एक किसी के ऊपर आपको component डालना पड़ेगा. Without component, that PC cannot have the interaction with you in a Swing. That is a problem, right? Whereas in the web, I don't have any kind of problem. I require only web browser. That's it, right? यही बड़ी बात है. That why we are to think upon the web technology. Now today I will focus on web technology, JSP Servlet. Obviously, if in the next lecture, if some time permits, then again I can discuss more on Swing as well. Swing में जो लोग को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं and they are saying no, even though whatever you will say, we stick with the Swing only. Fine, Swing is also better. I myself did some of the project in Swing also. तो Swing का क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है वो सब मुझे मालूम है, तो मैं पूरा डिटेल में बता सकता हूँ. बट फॉर टाइम बीइंग, इफ यू थिंक of your project to do it in JSP Servlet, you can save your time. Within stipulated time, you can able to design your project and you can able to show it, you can able to deliver it to us, right? That is why I'm just saying about the web technology. Now let's see what is there. So let's think about that. I'm having a client, right? Abhi मैं client हूँ, right? And this is my server, right? This is my server. Now I have started with the now JSP Servlet, right? Now the client hits the server. Hits means what? It gives the request to the server. In terms of what? In terms of URL. In terms of URL. Now this request is in terms of what? In terms of object. So this object
comes from the client and goes up to the server side. Now, in terms, the server gives what? Something called as a response. Again, it is in terms of object, right? So, what is there inside request object? What is there inside response object? That is also important, right? So that everything we will do it over here. Now, what happened? We are going to write down JSP files. We are going to write down the servlet files. Fine, right? Now, this JSP and servlet, how you are going to write the program and where you are going to store it. At the server, there is one more server called as middleware server. Middleware server. And now this middleware server is again very very important. This middleware server, there you are going to store the JSP file. There you are going to store the servlet file. In this middleware server, there is something called a JSP engine. There is something called a servlet engine, who is going to actually create a class file, so and so forth. So many things that it is going to do it. I will tell you what it is going to do it. There may be a database at the server side. There may be one more database, or there may be another file structure in the server. Now inside server there may be a middleware server, or it may happen that middleware server itself stores in different PC. यानी ये एक पीसी में है, अपना सर्वर भी दूसरा पीसी में है, right? So there may be structure that both things are different. Now in my case I am going to show you the demo where everything within the same laptop. यानी ये मेरे लैपटॉप में ही मेरा क्लाइंट है. आई एम ओपनिंग इट यूजिंग ब्राउजर. इसमें ही मेरा मिडलवेयर सर्वर है, इसमें ही मेरा डेटाबेस है, और इसमें ही यही मेरा सर्वर है, राइट? सो एवरीथिंग, दिस फुल बॉक्स इज माय लैपटॉप, right? So this thing is something called a multi-tier architecture that you might have seen, right? This is one tier, this is second tier, this is third tier, and it may chance that I may have the distributed database. So there is one more PC where I can keep the another part of the database, right? So इसको हम लोग बोलते हैं multi-tier application, multi-tier application. So it is very very important, right? Now the first step is this. What I required for web technology, I required something called as Tomcat. Tomcat is what? Tomcat is a middleware server, right? What else? This Tomcat is what? Tomcat is made by the Apache group. Apache group is a very very big group. There are so many projects that Apache group has made. One of the small project is called as a Tomcat, but it is also very big that it itself is a middleware server. You can just imagine how the big Apache group is, right? So, and why I'm using it, because it's an open source. It doesn't require any. So you can say it's a free. I don't require any kind of license version. What else I require? I require, or you may ask, what are the different kinds of middleware servers are available in the market? So are you going to focus only on Tomcat, or are there someone? Yes, there are many others. Like I will say, there is one server called WebLogic. WebLogic is built by one of the company. The name of the company again, last time also I forgotten. But there is one company who has made WebLogic, right? Then there is something called a WebSphere. WebSphere is made by IBM, right? Then there is something called as a Jaren, which is made by the Alaria company, right? And all these are the paid middleware server. I have to take a license, and after license only I can able to use that particular server, right? It depends upon how many clients you are handling. Depending upon the number of clients, you have to pay for that, right? So that's why suggestion is what you stick with it, right? It will be better for us. And there may be a chance that you will have the JBoss, then J together. So like this, there are so many other small servers also. These are the small middleware servers, right? But the best one is Tomcat server, which we are going to use it today, right? In this particular lecture. After that, I am going to show you that first of all, Tomcat server, how can I install it? The second step is what? The JSP page. How can you design the JSP page, and how can you run the page?
right? It's very important. And the third step is how can you write a servlet? How can you write a servlet? Is again very very important, right? So before going this, I would like to show you one very very important thing is something called as the MVC architecture. The last time I was shown it to you, but again I would like to discuss only one slide. So I think can you able to see, madam, ये visible है? Hello? Yes, sir. Ah, yeah, yeah. Okay, You can okay, continue. okay. So see, as I told you, there is something called as a MVC architecture, right? MVC architecture. This architecture is right. It came in the world, and after that, lot of technology, right? They arrived in this particular world because of only one thing called as MVC, right? What is MVC? Model View Component Architecture, Controller Architecture, Model View Controller. So what is model and what is view? First of all, look at the view. Look at the view over here. View is nothing but the JSP pages. What users are going to see is called a JSP, right? Who is going to control on JSP? Controller. So you have to write down the servlet for it, right? How can you interact with the database using the something called as model? Now here model is nothing but a Java bin. You are going to write a Java bin. What is Java bin? Again, it's a Java program. What is Servlet? Java program. What is JSP? It's the Java program plus HTML program. So here we are skipping this particular model. Directly through the controller, we are going to interact with the database. Directly through the controller, you directly interact with the database, right? Now see, let's find that out. There was one front controller design pattern, right? Last time I just not told you, right? Front controller means what? Front controller means what? It's a main door, right? See, let's say I have written the login form. I submit the login form over here. So I will have the mapping table. I will have the mapping table. तो ये मेरा जावा प्रोग्राम रहेगा उसमें खाली मैपिंग टेबल रहेगा तो देयर विल बी अ हैश टेबल right? Obviously, hash is a class in collection in Java, right? How to design it, how to create it, that I will tell you, right? लेकिन ये भी बनाने का अभी जरूरत नहीं है, but imagine that you submit a login form, it goes in the front controller Java program, it maps ये JSP फाइल आया तो कौन सा सर्वलेट कॉल करने का है, कौन सा वाला JSP फाइल आया तो कौन सा वाला सर्वलेट, so there is a mapping of JSP and servlet files. So why this mapping is required to call the servlet very quickly. इसको ही हम लोग बोलते हैं डिजाइन पैटर्न. नाउ डिजाइन पैटर्न दुनिया में आया उसको ही नाम दिया गया है फ्रेमवर्क. नाउ फ्रेमवर्क इज नॉट समथिंग न्यू रॉकेट साइंस, इट्स अ डिजाइन पैटर्न ओनली. ये डिजाइन पैटर्न है. हाउ यू आर डिजाइन दिस, what is your pattern, how can you access the file very quickly, how can you access the data very quickly, what is there. तो ये पहला फ्रंट कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न दुनिया में आया जिसका नाम है J2EE design pattern, right? So now if I click over here, so it will call this servlet. Let's say this is a login servlet. Internally it call the bin, and if it connects to the database, this bin is nothing but a model. This bin is nothing but a model. What is servlet? Servlet is a controller. What is view? View is a JSP. So model, right? View controller architecture. Model view controller architecture. It's very very important, right? The feedback of this is goes to servlet. Then this servlet decides whether I want to show the valid page or I want to show the invalid page. Again, if you click on the valid page or invalid page, again you have to go to the front controller. यानी whatever outside request, it will come to the server side. First of all, this hash table program will get activated, and then it will decide. Now you go to the next servlet, because this is the next request which is coming from the another file. तो कौन सा JSP है तो कौन सा सर्वलेट कॉल करने का. Next, it will call this bin. Again, it will go to the feedback over here. Now again, this servlet will decide कि ये मुझे कौन सा JSP कॉल करने का है. Whether again this is again new JSP. You got it. अगर ये JSP के अंदर भी मैंने क्लिक किया तो that request again it will go to the hash table. So whatever outside interaction is there, it is going to be handled by this
servlet, front controller servlet.java. This picture is clear to you, then you can have the applications. कौन सा भी एप्लीकेशन ले लो, जो आप नाम कौन सा भी ले दो, आप सीयू अटेंडमेंट ले लो, मार्क अटेंडमेंट ले लो, लैब मैनेजमेंट सिस्टम ले लो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट्स इट. आपका खाली फील्ड एंड टेबल का नाम चेंज हो जाएगा. Otherwise, your architecture, programming style, and the design pattern, or let's say call it as a framework, will get constant, right? वो same to same रहेगा, right? बाकी आप फिर भी कौन सा भी change करो, right? So this is very very important, right? Now, after looking at this table, let's go for the Tomcat server. How can you install the Tomcat server? So as I told you, that you go to the google.com, just say download Apache Tomcat, right? And go to the official website, Apache Tomcat, right? This is the old version, the latest version is 10, right? So you go over here, right? Tomcat 10, Apache Tomcat. ये server का main page है, and from here you download this zip file. Zip file download करो, right? You have this zip file with you, right? Do not, or you may go for the 64-bit Windows zip file. Click over here and you download this file. This zip file is important for you if you are having 32-bit, 32-bit. Otherwise, this 64-bit, this is only you are going to download it, right? If you are having the Linux and everything, then you think about the tar.gz and other format. Otherwise, this is a zip file. After downloading this zip file, you have to go to the C column and you are going to just copy paste it over here. You are going to just paste it. तो 10 के पहले मैंने लास्ट मंथ में किया था, तो ये आता. यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच इट इज अपग्रेडिंग, राइट? विद इन 1 मंथ एक नया वर्जन आ गया अभी, राइट? सो 9.0.39, राइट? सो यू मे डाउनलोड दैट फाइल एंड keep it over here. After this, just extract it over here only, unzip here. You require the administrative rights for this C column. लेकिन आपका एक है तो no need of any kind of other rights, right? So you may give the rights to over here. Unzip करो इसको. Unzip करने के बाद में you will have this file structure like this. Apache folder आएगा, उसमें ये सारे folders आ जाएंगे, right? So this is just a installation steps. We are not going to say next like this. Just download the zip file, put it in C column, extract that particular zip file. That's it. Then you will find out these particular folders and other files. उसमें से हम लोग को 3 folders बहुत important है. Whenever you install a new thing, new language, new server altogether, you require something like binary directory. So there is a bin for it. So bin is having so many utilities. इतने सारे utilities है. उसमें से 2 utility हम लोग काम में आने वाले. One is called a startup and another one is called a shutdown. Startup is going to start the server and shutdown is going to shut down the server. This we have to follow. ये हम लोग को follow करना पड़ेगा. Without shutting down the startup की है, without shutting down the server and you are shutting down the computer itself. So थोड़ा गड़बड़ हो सकता है. Once you will reboot the system. तो हम लोग को क्या करने का है? स्टार्टअप करने का है, बाद में शटडाउन भी करने का, राइट? देयर इज अ शेल स्क्रिप्ट मत चलाओ. शेल स्क्रिप्ट इट इज फॉर द लिनक्स, राइट? बट दिस इज स्टार्टअप फॉर द विंडोज बैच फाइल. ये दोनों करने का है. नाउ ये करने के पहले जस्ट लिसन टू दिस आर्किटेक्चर. देयर इज वन डायरेक्टरी कॉल्ड एज lib directory where you will find out all jar files, right? These jar files are very very important. As I told you last time, just now I just told you that Java is itself a open source, right? ये मैंने आपको बोला था and I have proved this using this program files रहता है, Java रहता है, JDK है, and this is the src file. तो src file हम लोग ने unzip किया था. Unzip करने के बाद में we have seen, right, what is system.out.println, right? So this thing we have studied this. This is just for I think 1 minute I will take it. You know, last time we have seen, what is the meaning of system.out.println. We have seen this, this is written in documentation. System is the class,
It is there in java.lang package, right? Out is a field variable. Now what is the meaning of field variable? As I told you, field is nothing but a static and final. Static and final का मतलब है field variable. Static is not a constant. Static means is attached to class. Final, sorry, not field, final, right? And this is an object of print string class. It is the object of print string class, and this print string class is there in java.io package. Right? Just imagine java.lang a system class, how it is calling the java.io package के class को object को कैसे बुलाता है वो, right? So there is a link of system and out. दोनों का मिलन किधर है? दोनों का मिलन है object class में. So object is itself is a class, right? Now if I am saying कि system और object का दोनों का मिलन है object में, now you will tell ये print method ये किसका है फिर? ये है print string का class का. Now to do to show this particular kind of structure, I have told you there is very important thing that you have to understand, and that understanding is nothing but your documentation. So documentation, I told you, you download the documentation, right? See that this is a documentation 11.0.8 doc. Again you unzip it, then you will find out this type of documentation, and ये documentation आपको देखना ही पड़ेगा to understand the fact of Java. Now again you will tell me why sir JSP storage में जाते हैं, why you are showing this, because JSP already consists of what? Java only ना. Java के बिना तो कुछ होने वाला है ही नहीं. तो Java का technology हम लोग को आना चाहिए. That's why I'm telling you. So this is what Java documentation we have seen it. There is one module called as java.base. उसके अंदर ये सब packages है. Now if you look at the java.lang, so many packages are there. It is only in core Java. Core Java में इतने ही packages है, लेकिन ये भी कितने हैं? Just imagine. Now what is the structure of your lib directory? अपना जो Java का directory है, last time I told you, right? Okay, I have told you that we are having the C colon program files and Java, and then we are having the lib. So where is my system dot class? System is a class. कौन सी jar file में? So there are a lot of jar files, right? What is jar file? Java archive files, right? And how your lib is. Last time I told you the difference between C and C++ library and the Java API. So Java का API कैसा होता है? We are having the lib directory. Inside lib directory there are so many packages like P1, P2, P3, P4 like that, right? Or in lib directory we can already add now. We are having the jar files. One jar file contains many packages. One package contains many classes. One class consists of many methods and field variables. ये है अपना lib directory in Java, right? If you understand this particular thing, then you will understand this particular documentation what I am showing you, right? And then you will understand, where the system is, where the out is. So if I am asking system java.lang package, right? And it comes from 1.0, and you can just see how many classes are there. Class नाम का भी class है, compiler नाम का class है, right? Float नाम का class है, math नाम का class है, object नाम का class है, package नाम का class है, and only one class at least now we are using string, everything is there, system class. So let's say system class. So if anybody asks you, what is system class? System class है क्या? So your answer will be what? System class is used to print the, not like that. System is a final class. Now because system is a final class, you cannot override that. You cannot override that, right? And it extends object. It extends object, right? So java.lang में ही system है और उसके ऊपर object class है, right? So पूरी दुनिया की जो class का hierarchy है, it starts with the object. It starts with the object. So this is very important. It is written over here that it cannot be instantiated. System s1 equal to new system. ऐसा हम लोग system का class instantiate नहीं कर सकते. And then you can say s1 dot out dot println. ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते. Why you cannot able to write? Because it is cannot be instantiated. ये documentation में ही है. उसका मतलब ही ऐसा हो गया that system dot java file if you open. And how can you open the system dot java file? I told you, right? It's very simple. Once you will go for the src folder जो मैंने बोला था, src zip file, you unzip it,
You open the src folder and see there is java.lang, and over here there is a system.java file. ये system.java file है, right? No, system.java file. You open it. So let's say I open it using Visual Studio Code, and let's see what is there inside the system.java file के अंदर क्या है वो देखते हैं. तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई system.println whatever I am using it मैं core Java, what it is, ये है क्या, सिस्टम में है क्या, आउट क्या है, println क्या है, println मेथड ओवरलोडेड है क्या, कैसी मेथड है, right? That I should know, I should understand that, right? So it will take it immediately. Yes. So it is opening the file system.java. Yes, you can see the system.java file. This system.java file है. Just understand this. इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये देखो, ये लास्ट टाइम मैंने इधर आउट का O1 किया था मैंने, राइट? तो एंड माय क्वेश्चन वाज, यू नो, कैन आई राइट system.o1.println? देन यू विल O1 कैसे ले सकते हैं? अरे लिख सकते हैं. You open system.java file, you write it over here, ये override करो प्रोग्राम को कंपाइल करो, उसका jar file बनाओ, this jar file you keep it in your lib directory again, you restart the computer, and in your PC you can use system.o1.println, right? Because Java is not open source. Open source का मतलब ध्यान में रखो, open source का मतलब है source is given to you. It's now understandable about us, यानी हम लोग को अपना लेवल होना चाहिए कि भाई ये कोड पढ़ने का. If you know this code, yes, then you know the Java. Are you getting it? Okay, this is very important for us, right? So ये कभी-कभी ये आराम के साथ देखने की बात है. आपको जब भी टाइम मिलेगा, आपको जावा में इंटरेस्ट रहेगा तो ये देखो. अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन तो आपको मैंडेटरी है, ये तो देखना ही पड़ेगा, राइट? So now if you see, look at the field यानी field summary, right? Field summary is there. यानी सिस्टम क्लास का स्टैटिक ऑब्जेक्ट है आउट, लेकिन आउट ऑब्जेक्ट किसका है? एक्चुअली प्रिंटस्ट्रीम क्लास का है. आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंटस्ट्रीम क्लास. If you click on the out, you can see this public static final printstream out. And now if you look at the printstream class, then you can imagine that printstream is there inside filter output stream, inside object, right? This is there, you know. So why I'm telling you, know, because this is very very complicated. If you see the Java itself is very even though it's complicated being built, but for usage it's so simple. For usage it's so simple. You are just going to write what system.out.println, that's it, hello world, अपना प्रोग्राम हो गया. लेकिन सिस्टम आया किधर से, आउट किधर से आया, प्रिंटलन किधर से आया, ये अगर आपको मालूम पड़ता है तो आपको जावा समझ में आ जाएगा. अगर आपको जावा समझ में आता है तो जावा का कौन सा भी टेक्नोलॉजी में आप प्रोग्राम कर सकते हो. लाइक यू कैन एबल टू शिफ्ट फ्रॉम जावा टू सर्वलेट टू जेएसपी टू ईजेबी टू कोरबा टू इन डिफरेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, बिकॉज जावा, right? You can see the println method. See println method इधर है, यानी print stream class के अंदर println है, and all this is method is overloaded method. ये method overloaded है, right? कोई आया है नहीं. Okay, this is the overloaded method, right? This is very very important. Okay, so now again come back to our lib. ये जेडीके का जैसा lib है वैसा ही tomcat करेगा, because tomcat is also, see, I am going inside the Tomcat, right? You can see the lib directory, see jar files. Now ये jar file क्या है ये समझने के लिए मैंने आपको core Java का jar file बताया, right? Otherwise that jar file and this jar file is one and the same thing. Here also we have got lot of jar files, and inside the jar file there are so many packages. One package consists of so many classes. One class consists of so many methods and fields. ये है आपका lib का architecture, right? ये समझ के ले लो. Can you have your own jar file? Yes, you can make your own jar file. You can make your own पैकेज बनाओ, 4-5 पैकेज बना के एक जार फाइल बनाओ, एक जार फाइल बना के लिब में डालो, और लिब में डालने के बाद में लोगों को बोलो मेरा जार फाइल इस्तेमाल करो, राइट? व्हाट यू वांट आफ्टर दिस, व्हाट यू वांट समथिंग कॉल्ड एज, आई एम टॉकिंग अबाउट Tomcat. After unzipping the Tomcat, you require something called as the environment variables. ये हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा.
Now उसमें there are 4 variables. One is called as path, another one is called as class path. इसके लिए class path बोला जाता है. By the way, class path के लिए हम लोग lib का link देते हैं, right? Because I am accessing the classes. I am accessing the classes inside the packages. That's why I require what? Lib of class path, right? And this is I am giving the bean because I am going to use a utility. I am going to use a utility of this. The third thing, there is something called as Java home. This is the interface. This is the home interface. मेरा Java किधर है, right? And मेरा Tomcat किधर है? So there is an interface called as Catalina home. Catalina home. ये 4 वेरिएबल है. 4 वेरिएबल का पाथ मुझे एनवायरमेंट वेरिएबल देना पड़ता है. अगर इसमें से एक भी पाथ बराबर नहीं दिया तो मेरा Tomcat सर्वर स्टार्टअप डबल क्लिक करने के बाद में चलेगा ही नहीं. So first of all, let's look at how can I go ahead. I will go ahead in the system. Then I will go ahead in the system settings, and there is the advanced environment variables. Now, as I told you, that path is already been there. So then I have to just edit the path. Path edit करो and just go through over here. ये जो bin है, ये bin का मुझे path देना पड़ेगा. So copy the bin path and go over here. I have already given it. So let's say I copy pasted it over here, and you have to put a semicolon. Semicolon is mandatory in path. तो लास्ट में जाके पेस्ट करो, लास्ट में वापस सेमीकोलन दे दो एंड से जस्ट से ओके. तो ये बन गया मेरा पाथ, राइट? एज आई टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल एंड यूजर वेरिएबल. आई हैव टू डू इट इन सिस्टम वेरिएबल, नॉट इन यूजर वेरिएबल. ये पहले समझ के रखिए. देयर इज अ क्लास पाथ. क्लास पाथ भी आपके पास रहेगा, राइट? बिकॉज जेडीके के लिए क्लास पाथ लगता है तो आपने ऑलरेडी सेट किया रहेगा. नहीं किया तो न्यू करने का और इधर बोलने का क्लास पाथ. एंड ओवर हियर यू आर गोइंग टू गिव द जेडीके पाथ, राइट? ये जेडीके का पाथ देने का, इसका नहीं, राइट? तो यू रिक्वायर दिस, राइट? ये सोलेट का दिया है, इसका नहीं दिया है, बट जेडीके का क्लास पाथ देने का, राइट? देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जावा होम. जावा होम यानी किसका देने का पाथ? सी कोलन प्रोग्राम फाइल्स जावा एंड जेडीके. बस इसका पाथ, बीन और लिप का नहीं. Only this path I have to give it to over here. बस no semicolon, nothing. और वेरिएबल का नाम भी कैसा आना चाहिए? कैपिटल लेटर, JAVA_HONE, कैपिटल लेटर में. जस्ट सी दिस. क्या करने का? न्यू करने का. न्यू करके इधर वेरिएबल का नाम लिखने का, java_home, and just paste the path like this. Don't put semicolon, just say okay. ये आपको करने का java_home के. Then there is something called as Catalina home, जो मैंने किया है, लेकिन अभी आपके पास नहीं रहेगा तो न्यू करो. just say Catalina home, and over here you are going to give the path of Tomcat. अपना Tomcat किधर है? बस Tomcat का देने का पाथ. bin का lib का नहीं देने का है. bin का और lib का देने का ही नहीं है. मेरा Tomcat किधर है? It's a home interface. Where is my home? Where is my residence? My residence is in Tomcat server. उसके अंदर क्या क्या है? That is none of the business of home interface, right? Java_home. Here, there also I have to just tell where is my Java, where is my Java, and where is my Catalina. Catalina, you can imagine it's an secretary, or she is the secretary who is there inside a Apache server or Tomcat server. Tomcat server के अंदर पहला दरवाजा ओपन किया तो Catalina बोलेगी good morning, like that. So she is a home interface for all of us because she is going to interact with the outside world, right? So I require these 4 paths. So I think now say okay और बाहर आने का, right? So you got it, right? Here मैं semicolon डालूंगा, इसके अंदर मैं semicolon डालूंगा, इसके अंदर मैं जावा का पाथ दे दूंगा और इसके अंदर मैं कैटेलिना का पाथ दे दूंगा. बस that's it. ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन ऑफ टॉमकैट, राइट? तो इंस्टॉलेशन में आपने क्या किया? इंस्टॉलेशन में आपने जिप फाइल डाउनलोड किया, राइट? उसको अनजिप किया किधर? सी कोलन में, राइट? एंड देन यू सी कोलन में करने के बाद में यू गो टू द एनवायरनमेंट वेरिएबल, राइट? एनवायरनमेंट वेरिएबल में अपने 4 पाथ सेट किया, राइट? वो होने के बाद में नाउ आई हैव टू स्टार्ट माय सर्वर. तो आई विल गो टू द bin एंड ओवर हियर स्टार्टअप में जाके मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, दैट्स इट.
If I found this particular screen, if I am getting, right, that means whatever environment variable I have set, these were correct. अगर कुछ गड़बड़ होता है, यानी मैं सेमीकोलन डालना भूल गया और सेमीकोलन डाला है ऐसा, और जावा होम का जे स्मॉल किया है, एच स्मॉल किया है, अंडरस्कोर के बजाय हाइफन डाला है, एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इफ आई डिड इट इन एनवायरमेंट वेरिएबल, तो ये मेरा वाला स्क्रीन नहीं दिखेगा। और दिखेगा भी तो ये जो आपको ये जो सब दिख रहा है, राइट, इसमें आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाएंगे। अभी मेरे इसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं है सीरीज। अभी ये है क्या वो थोड़ा सा बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी एक्सेप्शन नहीं है, राइट। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर, अभी मैं आपको एक रीड करके बताता हूँ, ये 2 लाइन रीड करके बताता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा क्या है। जैसे इधर लिखा है ना, और इधर से 2 नवंबर से मैं बताता हूँ। हाँ, 1 सेकंड। हेलो हेलो, अरे अनम्यूट नहीं किया है? Hello. So here just I will read this line from 2nd November, right? Today is the 2nd November. So you can look at all these lines. दो लाइन आपने पढ़ा ना, यानी पढ़ने का चालू किया सपोज ऊपर से, तो आपको हर एक लाइन पे 2 नवंबर करके आएगा। तो 2nd November, right? I am having this particular right file. You can see Apache में वेब एप्स नाम का डायरेक्टरी है, उसके अंदर टेस्ट नाम का डायरेक्टरी है जो हम लोग ने लास्ट टाइम बनाया था। वो टेस्ट नाम का डायरेक्टरी है, तो टेस्ट नाम का डायरेक्टरी इज फिनिश मींस इट इज बीइंग रनिंग नाउ, ये स्टार्ट हो गया। हर एक इसमें आपको नाम है, देखो टेस्ट टेस्ट, देयर इज अ सैंपल फोल्डर, देयर इज अ रूट फोल्डर, राइट, देन देयर इज अ मैनेजर फोल्डर, राइट। तो हर एक जो वेब एप्स यानी वेब एप्लीकेशन, whatever web application you are building, you are creating, you are developing, it is there inside the web app directory। और ये जो वेब ऐप डायरेक्टरी के अंदर जो है, तो आपको हर एक डायरेक्टरी का ये सिमुलेशन बता रहा है, ये हो रहा, वो हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एंड एट लास्ट इफ एवरीथिंग इज फाइन, देन वी विल से द कैटेलिना इज नाउ स्टार्ट। यानी ये स्टार्ट हो गया, उसका मतलब इस ये कैटेलिना होम के अंदर इतने सारे एप्लीकेशंस ओपन हो गए, applications open हो गए। Now it's up to the client. If client knows what is there inside the sample, he can able to access it. Go for it. If you know what is the test, you can access it. If you know what is in root, you can access it. So how many web application you can build in one Tomcat server? Many applications. One application can be your CO programming, ये programming, वो programming, जो भी आपका जो भी application रहेगा, library फलाना फलाना फलाना, all the applications you can store it only in one Tomcat server as well. राइट, तो ये मैं मिनिमाइज करके रखता हूँ, ये मिनिमाइज करके रखता हूँ, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज यू आर गोइंग टू राइट डाउन द कोड फॉर इट, राइट। तो कोड हम लोग को लिखने का है वेब एप्स में, एंड देयर यू कैन सी देयर इज अ टेस्ट फोल्डर जो हम लोग ने बनाया है, राइट। टेस्ट नाम का फोल्डर बनाया, राइट। उसमें वी हैव क्रिएटेड द 2 फाइल्स, जावा फाइल्स हम लोग ने बनाया। सो लेट्स ओपन दिस फाइल्स, ओपन फोल्डर, हम लोग फोल्डर ही ओपन करते हैं। सो लेट्स डू इट, राइट। इसमें से बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें ना, इट्स रिपीटेबल फॉर मेनी ऑफ यू, बट आई हैव टू रिपीट दैट। And for them it's a new thing, right? Now, last time you have seen this, right? It's very simple program we have seen, very simple program where you can see the program that I am having the full HTML file, पूरा का पूरा HTML file here, right? And inside this we are having only outer println. So let's say second dot, see this, this is a very simple code, very simple code, HTML code ही है। अरे बॉडी के अंदर मैंने जावा कोड एम्बेड किया है। नाउ हियर वी डोंट हैव द सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, व्हाट वी आर हैविंग आउट डॉट प्रिंटलन। नाउ यू विल से कि ये जो आउट है वो पहले मैंने बोला था वो प्री स्ट्रिंग क्लास का है,
ये आउट किसका है? तो ये आउट जेएसपी राइटर का है, जेएसपी राइटर क्लास, उसका पूरा हिस्ट्री अलग है, राइट? तो इफ आई एम सेइंग जावा डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ, then you will understand what is there inside it. Okay, का पीडीएफ वर्जन भी है शायद से, और यू में से जेएसपी राइटर आउट, सी मैं डायरेक्टली उसके अंदर जाता हूँ, राइट? ये डायरेक्टली जेएसपी राइटर नाम का डायरेक्ट क्लास ही है आपके लिए, राइट? उतना भी नहीं, देयर इज वन मोर आउट इन सवलेट, और वो जो सवलेट है ना, वो और किसका है, और भी किसका है, वो उसको रहते हैं प्रिंट राइटर का आउट है वो, प्रिंट राइटर, राइट? सी ये देखो, ये सवलेट का है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन, सी सवलेट प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर सवलेट. नाउ if you can see, right, there are three types of out object, राइट? एक है प्रिंट स्ट्रिंग का है, जो आप इसके साथ इस्तेमाल करते हो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर, आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, राइट? द सेकंड थिंग इज जेएसपी राइटर, जो अभी मैं जेएसपी के अंदर यूज कर रहा हूँ, वो कौन से क्लास का है? जेएसपी राइटर का. उसका पैकेज कौन सा है? उसका पैकेज भी अलग है, इसका पैकेज अलग है, इसका जावा डॉट आईओ है, इसका शायद से जावा एक्स डॉट समथिंग समथिंग पैकेज इज देयर, दैट पैकेज आई विल टेक जस्ट नाउ. एंड देयर इज वन मोर आउट, ये प्रिंट राइटर का है, ये प्रिंट राइटर का है. अभी इसमें देखो, प्रिंट राइटर क्लास का जो है ना, प्रिंट राइटर आउट डॉट, यानी ये आउट ऑब्जेक्ट आई कैन एबल टू इंस्टेंशिएट, अदरवाइज प्रिंट स्ट्रीम का क्लास इंस्टेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, इसका इंस्टेंशिएट मैं नहीं कर सकता हूँ, इट इज ऑलरेडी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, राइट? बट प्रिंट राइटर क्लास का भी ऑब्जेक्ट है, ये सवलेट में पाया जाता है, राइट? ये जेएसपी के अंदर, और ये अपना कोर जावा में कोजो प्रोग्रामिंग. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आउट, राइट? जस्ट रिमेंबर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखो जेएसपी ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल आपको मैं बाद में ये पीडीएफ फाइल देता हूँ, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? हियर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ इसमें, तो आई एम जस्ट डायरेक्टली डूइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और इसमें पूरा दुनिया भर का बात दिया है, वो आप देख सकते हो. सी जेएसपी राइटर, ये जावा डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही है ना, जेएसपी राइटर इज द क्लास, ये क्लास है, राइट? और जेएसपी राइटर के इट इज देयर इन विच पैकेज, ये पैकेज है java x.solid.jsp.star, java x.solid.jsp, ये पैकेज के अंदर जेएसपी राइटर क्लास है. जस्ट सी दिस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये बात मालूम होना चाहिए स्टूडेंट को, बिकॉज अदरवाइज व्हाट यू नो, टू राइट दिस प्रोग्राम इट टेक्स ओनली 1 minute फॉर यू, बट टू सी व्हाट इज, वो आया किधर से, मैं क्या कर रहा हूँ, किधर से करने का है, इफ यू आर नॉट नोइंग दैट, देन इट इज गोइंग टू बी यूजलेस फॉर यू, राइट? जैसे आपने कोर जावा के 15,000 प्रोग्राम कह रहेंगे, बट इफ यू आर नॉट नोइंग द थ्योरी बिहाइंड इट, फायदा नहीं. So like this, out.println hello world. Now you can see I have embed the HTML within Java. Within Java. Let's look at the output. ये output देखने का कैसे? Now after starting this, let's open this Tomcat server. So what is the Tomcat server? 127.0.1. It is a local host colon 8080. इट्स अ पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर पे आपका टॉमकैट सर्वर अभी रनिंग है आपके सिस्टम में, राइट? आफ्टर एंटरिंग दिस यू विल हैव दिस होम पेज, ये होम पेज दिखाई दिया, उसका मतलब है आपका टॉमकैट सर्वर बराबर से इंस्टॉल हो गया, राइट? देन आई एम हैविंग द टेस्ट फोल्डर, टेस्ट नाम का फोल्डर है, एंड आई एम हैविंग द प्रोग्राम कॉल्ड एज second.jsp. I hit it, I got a result, hello world. जो हेलो वर्ल्ड इधर लिखा है वो मेरे को आ गया, राइट? सो out.println it is going to print on the web page, right? And why web page? Because ये out object is not a part of JS print stream. Again I am repeating, it's a part of JSP writer which is there in Java X, right? .servlet.jsp package. वो पैकेज अलग है, सब कुछ अलग ही है, right? And that's why this is very very important, right? ये बहुत important है. I told you last time, but this is once again I
did this up to this much. So is anybody having a doubt up till now? And over here I can have so many things, right? Scripted reset, you can have the expression statements, then you can include the files, right? Include the other files, you can import the classes, packages, so many things you can do it, right? So last time I have told you that thing also. सर Now, बोल. सर तुम्ही जो हा नंबर ब्राउझरवर नंबर टाईप केला म्हणजे लोकल होस्ट तुम्ही बोलले, हा हा. कसा मिळाला? म्हणजे हा कसा आपल्याला कळणार? प्रत्येकाचा वेगळा असेल की सेमच असतो? नाही, सेम 127.0.0.1 ना, इट्स अ लोकल होस्ट हा स्टँडर्ड आहे. कोणत्याही कोणत्याही डेस्कटॉप लॅपटॉप असून दे, कुठलाही असू दे, 127.0.0.1 इट्स अ लोकल होस्ट. राईट. यू कॅन पिंग लोकल होस्ट केलं तर तुम्हाला हाच आयपी ऍड्रेस दिसेल. कळलं? ठीक आहे. हा, आणि कोलन 8080 तर टॉमकॅट सर्व्हरचा बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर आहे. ओके. पोर्ट नंबर आहे. ओके. म्हणजे आता मला माझ्या पीसीवर रन करायचं तर मलाही हाच टाकायला लागेल? Yes, obviously. Now, if this PC is now connected to internet, suppose, and if you know my IP address of this PC, यानी माझ्या लॅपटॉपचा तुम्हाला IP address माहिती असेल, तर तो IP address जर का तुम्ही इकडे दिला 198. whatever is there, तर तुम्ही माझा हे पेज पण तुम्हाला मिळेल. तुम्हाला समजलं? ओके, ठीक आहे, समजलं. This is important, very important thing. Now the thing is, now the story goes like this. That story also I told you, but again for the new, as JSP. आता JSP में जेव्हा प्रोग्राम लिहितो, and once I am compiling and executing it, right? When I am compiling it, this JSP file divides into two files. One is called as .html and another one is called as .java. Actually pure Java, core Java. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचा HTML वगैरह कुछ नहीं, ओनली प्योरली जावा, एंड दिस इज प्योरली HTML. अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो इंटरनली इन टॉमकैट सर्वर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ इंजन. बरोबर है? लास्ट अभी जस्ट मैंने आपको बोला था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंजन. सो ये JSP इंजन जो होता है, JSP इंजन, राइट, इट टेक्स केयर ऑफ दिस. सो दिस डिवाइड्स द फाइल इनटू टू, .html and Java. This engine send these Java files to JVM to compile Java code and generate .class file code. And after the output of this class file, now you store it in HTML and then you show the HTML file to client. ऐसा उसका ये है. यानी ये हेलो वर्ल्ड जो दिखा है आपको, इतना सिंपल नहीं है, इसके अंदर इतना सारा झमेला हो गया है. What happened? There is one subroutine, the JSP engine. It divides this second.jsp file. It divides into two, HTML and Java. ये Java file, it goes to the JVM. Who is going to give? JSP engine. It converts into .class file. The output of this class file, it embed into the HTML, and this HTML is going to show to the client. Now, if you look at this particular view source, right, you can see where is my Java code. Java code है ही नहीं इधर, ना scripted है, ना script and outdoor printer है, कुछ भी नहीं है. This is what is something called as the security of Java, right? Whatever business logic I would like to write over there, that business logic remains in that particular server side only. Client के हाथ में खाली HTML कोड ही मिलता है. Client के हाथ में वो JSP और Java कोड मिलता ही नहीं है. That is the beauty of JSP, right? That's why many web servers or many web applications which are very, very important, right? They are written in JSP because of this reason. Security, only one feature, very big feature, security, right? That's it. So, ऐसा है. So now the thing is, now anybody asks you show me where this HTML file is being created and where is the Java file is being created. Java file है किधर, right? So let us trace that program, right? So as I told you, web apps में तो अपना ही काम है. So there is a folder called as work folder. So go to the work folder, Catalina, localhost. See the test. Now this test folder I have not created inside the work folder में तो मैंने कुछ भी नहीं किया. तो ये work यानी काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है JSP engine on behalf of my web application. Now inside that you can go. ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, वो अपने आप किया. See this second.jsp,
ये सेकंड डॉट जेएसपी, राइट, ये किसने लिखा? वो जेएसपी इंजन ने लिखा। सीरीज ये इतना बड़ा कोड लिखा उसने, जावा का प्योर जावा कोड। दिस कोड आई हैव नॉट रिटन, एंड व्हाट इज देयर इनसाइड, राइट? इनसाइड दैट वी आर हैविंग ओनली हेलो वर्ल्ड। ये था हम लोग का आउटडोर प्रिंटर है ना। मैंने खाली आउटडोर प्रिंटर नहीं लिखा, लेकिन जेएसपी इंजन ने मेरे लिए इतना बड़ा सोलिड का प्रोग्राम लिखा, जावा कोड लिखा। यू कैन जस्ट इमेजिन। अभी आप पूछोगे सर मैंने जेएसपी का इतना एक 100 लाइन का कोड लिखा, तो इधर तो मेरा 1000-2000 लाइन का कोड बन जाएगा। यस, इट इज गोइंग टू बी देयर, राइट? बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये मालूम नहीं है ये क्या होता है, ये एक्सप्रेशन फैक्टर क्या है, जेएसपी फैक्टर क्या है, राइट? हाउ दिस पैकेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको कभी ना कभी, अगर इफ यू आर इन देयर इन जावा प्रोग्रामर, अगर आपने जावा कैंडिडेट करके कोई इंडस्ट्री में आपको लिया, तो जावा कैंडिडेट करके आपको ये सब मालूम होना चाहिए। इट्स मैंडेटरी, क्योंकि डिबगिंग तो इसमें ही होता है। डिबगिंग तो इसमें होता है। सीरीज सेशन संभालता है वो, एप्लीकेशन है, कॉन्फ़िग है, राइट? पेज लेआउट है, पेज कंटेक्स्ट है। व्हाट इज नो पेज कंटेक्स्ट का मतलब क्या है? वेदर यू आर हैंडलिंग द HTML page, HTML content, or you are having the media file, or you are having the analog contents, ये सब कंटेंट्स का काम देखने का काम, ये सब वेरिएबल्स यू कैन जस्ट सी ऑल दीज आर व्हाट फील्ड वेरिएबल्स। ये सब फील्ड वेरिएबल्स है। ऑल दिस फील्ड वेरिएबल्स आर यू हैव टू सेट इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन, राइट? इंडस्ट्री में आपको बोला जाता है कि भाई मेरे को सेशन संभालने का है, तो सेशन आपको फिर ये सेशन ऑटोमेटिकली आपको देता है। दिस कोड इज बीइंग जनरेटेड फॉर यू। तो आपको इसमें खाली आपको ओवरराइड करने का है कोड को। यू आर गोइंग टू ओवरराइड दैट। आपको ओवरराइड करने का है कि भाई सेशन में मैं क्या रखूं, कैसे रखूं, राइट? इट राइट, क्या करने का है? एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट में क्या है, आपको खुद को लिखने का है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आफ्टर दिस आई विल जस्ट वुड लाइक टू टेल यू, सी नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये अगर मैं बोलता हूँ आपको, ये देखो ये मेरा वाला पेज है जो मैंने लिखा है। तो you go on designing your pages using HTML directly. Don't write this. ये लिखो ही मत, आप अपना काम करते जाओ। लॉगिन पेज, ये पेज, वो पेज, सब फटाफट वेबसाइट के पेजेस यूजिंग बूटस्ट्रैपिंग ना यूज सो यू कैन जस्ट सी HTML5 है ये। So meta tag, viewport and everything. This is going to be there for responsiveness. यही तो responsive के लिए लगता है। You design your website totally with your bootstrapping, programming and everything. Did it. After doing that, then you talk about किधर मैं जावा उसको घुसूं, बताओ मेरा जावा किधर काम में आएगा, मेरा सर्वर किधर काम में आएगा। ये सब दुनिया पे थोड़ा बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। आर यू गेटिंग? तो आप ये पेजेस तो बना सकते हैं। पेज बनाने का काम मुझे लगता है अगर मैं आज आपको देता हूँ और पूरा डेडिकेटेड बोलता हूँ, कल मुझे आपके सब प्रोजेक्ट्स का फाइल बना के रेडी होना चाहिए। यू कैन इमेजिन टू डू इट। पूरा आप पेजेस बना के, आप आपके जैसे मैंने इधर टेस्ट फोल्डर बनाया है, वैसे आप आपके फोल्डर में बना के क्रिएट योर ओन फोल्डर एंड यू कीप इट ओवर हियर एंड यू कॉल इट यूजिंग दिस सर्वलेट, यूजिंग दिस सर्वर। इधर आपका फोल्डर का नाम रहेगा और इधर आपका इंडेक्स पेज रहेगा। सपोज यू आर हैविंग इंडेक्स पेज, बट और एवरीथिंग यू हैव टू सेव इट एज .jsp। इवन दो यू आर राइटिंग HTML, सेव इट एज .jsp बिकॉज अल्टीमेटली आपको उसके अंदर पूरा जावा प्रोग्रामिंग करने का है। इट्स नॉट वन लाइन कोड। ये खाली मैंने वन लाइन का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है। इट डजंट मीन दैट यू हैव टू स्टिक विद दैट आउटर प्रिंटर ओनली। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन JSP, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? एट वन टाइम आई हैव रिटन माय सेल्फ so many programs in industry। एक प्रोग्राम JSP फाइल, it was LOC मीन लाइन ऑफ कोड कितना था, 3,344,000 लाइन ऑफ कोड that we have written it, 4,000 लाइन ऑफ कोड। जिंदगी में पहली बार मैंने 3,000 लाइन का कोड सक्सेसफुल करके दिया था, तो मुझे मालूम है मैंने कोड लिखा कैसे। बट दैट वाज द कोडिंग स्टाइल, अभी आपका जमाना है। यू आर द ग्रास्पिंग, यू आर द न्यू इंजीनियर्स। आप मेरे से भी अच्छा प्रोग्रामर हो, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, राइट? बट दिस इज अ startup I have given you. Startup I have given you, right? Second thing. Second thing is this. The next thing I would like to show. आज के लिए मुझे दिखाने का ही टाइम है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आफ्टर दैट आपको ये करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट अ सैंपल
ये सैंपल में दिखा रहा था. आई थिंक इंशा, हैव आई शोन यू ऑल दिस फाइल्स? हेलो इंशा, आर यू देयर? हेलो. Yes, yes, sir. तो मैंने ये फाइल आपको दिखाया था क्या लास्ट टाइम? Hello. हाँ, मैंने ये फाइल दिखाया था क्या आपको? हेलो. Yes, sir. Yes, yes, sir. ये डेट Sir, फाइल these सेंड करके. programs ना हाँ हाँ, ये वाले प्रोग्राम जैसे ये वाला डेट सर फाइल है. आपने हाँ डेट का दिखाया था एंड दूसरे बाकी के यस यस, जावा करेक्ट. फाइल्स. हाँ, ये दिस थिंग राइट. Yes, yes, sir. या सो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स फॉर यू, कि जैसे मैंने थ्रेड सेफ लिखा है तो इट इज लाइक मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग इज पॉसिबल इन जेएसपी, लेकिन मुझे ये लिखना पड़ता है. तो दिस पेज इंक्लूड्स, ये पूरा जेएसपी फाइल इंक्लूड्स व्हाट, द जावा कोड. तो ये मुझे लिखना पड़ता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोड आई हैव रिटन इट इन जावा एंड द स्मॉल कोड. यानी कितना लाइन लिखा है देखो, एचटीएमएल का मैंने 3-4 ही लाइन लिखा है, वेयर जावा का ज्यादा लिखा है. सो द होल पेज, होल वेब पेज, that is the web page. I am going to write a Java code. I have to write how many packages I have to import. So import का attribute है, that import attribute I have to write it within this. See this scripted syntax. ये वाला syntax देखो, ये वाला syntax देखो, तो थोड़ा अलग अलग syntax है, right? Many things are there, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे syntax आएंगे आपको, right? ये देखो, right? मैंने बीच में HTML लिखा है, बीच में scripted लिखा है, right? So these are some of the examples. Like say I will also show you. See, this is a declaration tag, right? ये expression tag है, expression tag. So these expression tag, declaration tags, these are going to be there. Don't worry, I am going to what I will give you, I will store all these my JSP files in my GitHub account, and this GitHub account I will share it to you. Don't worry. ये पूरा मैं शेयर करता हूँ, so that you will have the sense of it. ये क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है. जैसे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, राइट? लेट्स सी 6 ड्रॉप डाउन डॉट जेएसपी, राइट? ये चीजें हम लोग करते हैं. क्या करने का है, फाइल इनटू डायरेक्ट डॉट जेएसपी, राइट? ये नाम मालूम होना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है. नाम आई फॉरगेट द नेम्स. So I'm having this sample because ये क्या, तो मुझे कुछ दिखता नहीं है ना, that is the problem. ये फाइल का नाम इम्पोर्टेंट है, फाइल include and directive डॉट जेएसपी. एक बैच को पढ़ाते पढ़ाते ये नाम ही ऐसे देखा, बिकॉज दे वांटेड दिस नंबर वाइज प्रोग्राम. तो मैंने वो हर एक फाइल को नंबरिंग ही किया, तो भाई ये ले लो चलो इसके लिए. सो यू कैन जस्ट इमेजिन देयर इज अ कस्टम हेडर, नाउ देयर इज अ द फूटर एंड दिस थिंग, राइट? व्हाट एवर हाउ आई एम इंक्लूडिंग द फाइल इज दिस. ये देखो इंक्लूड टैग, ये देखो फूटर का पूरा एचटीएमएल फाइल मैंने ऐसा इंक्लूड किया है. जस्ट सी द सिंटैक्स. एग्जांपल है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, राइट? दिखने में इतना सिंपल लगता है, बट उसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है. हाउ कैन आई इंक्लूड? सी आई मे हैव राइट, आई कैन राइट डिफरेंट डिफरेंट एचटीएमएल फाइल्स, और एक एचटीएमएल फाइल में खाली में इंक्लूड करते जाएगा बस. तो इंक्लूड करते ही मेरा एक प्रोग्राम बन जाता है. तो इट विल बी लाइक दिस. देखो मैंने पूरा हेडर फाइल इंक्लूड किया है, राइट? फूटर डॉट एचटीएमएल इंक्लूड किया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, now we will look at this. ये HTML का देखो, सिर्फ ड्रॉप डाउन HTML, ये वाला प्रोग्राम देखो, ड्रॉप डाउन डॉट HTML. सी ये है, so right, so I am having this combo box. Now this coding that you are knowing it because you are a champion in this HTML, right? So simple select tag है, उसमें कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं है, right? Now what happen, once I select this, I am calling this file JSP file, and what I am going to do, I am going to get this parameter from this HTML in this using the request.get parameter. See this request.get parameter, ये atom नाम का select box है, combo box. See name of the combo box is atom, ITEM, right? तो जो मैं वैल्यू सिलेक्ट करेगा इधर, ये वैल्यू आएगा, ये स्ट्रिंग में आएगा, and that string I am going to print it. It makes sense, very simple one.
बहुत सिंपल है. And after that again I am dropping this HTML file and the same file I am going to show it again. तो मुझे इधर वापस वो सिलेक्ट विलेक्ट लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, राइट. जस्ट सी इट. अगर मैं लेट्स से अगर ये पेज सिलेक्ट करता ट्विन पिक स्टेप्स एंड आई एम एडिंग इट सर ट्विन पिक स्टेप्स, so I am calling this JSP file and I am getting the get parameter मिला मुझे. And this file, this again I recalled, I called it, right. This is very very important. So these small examples are there. How can you get the parameter एक फाइल से दूसरे फाइल से कैसे पास करने का. See now you are having totally with Java file. इसके अंदर टोटल जावा प्रोग्राम करने का, राइट. अभी तो मैंने एक एक दो लाइन तक किया है. और लाइक दिस नाउ अगेन सेम थिंग. चेक बॉक्स के अंदर है एप्पल ग्रेप सो एंड सो, राइट. एंड यू आर गोइंग टू सेंड दिस पैरामीटर. ये देखो ये पूरा का पूरा जावा कोड है ना. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स अरे लिया है, राइट. दिस इज द डायनामिक ऑब्जेक्ट्स आई हैव डिक्लेयर्ड इट. आफ्टर दैट गेट पैरामीटर वैल्यूज, यानी एक साथ मैंने 4-5 पैरामीटर लिया है एंड इट इज गोइंग टू स्टोर इन 0 1 2 3 4. इट्स लाइक अरे फिल किया. Now this I am saying if fruits is not equal to null, right, for loop use करो and over here list tag है, list tag से वो drop down करो फटाफट and else you can write down none selected. Java code is see how it is interactive, कितना interactive है. और आपको इसमें से एक लाइन भी जावा कोड दिखेगा नहीं if you view source the code. यानी आपने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया है, लॉजिक इज टोटली हिडन. अगेन इट्स अ एग्जांपल ऑफ जावा इज सिक्योर्ड लैंग्वेज. 7 checkbox.html. लेट्स रन इट. यानी ये सारी चीजें आपको आपके प्रोजेक्ट में काम में आएगी. इसके लिए मैंने छोटे छोटे एग्जांपल सब ये पहले करके रखा है. एप्पल ऑरेंज, if I select it, see this apple and oranges, so it is there in JSP file. JSP फाइल में ये सब मैंने किया. कैट पैरामीटर लिया, फ्रूट में अरे डायनामिक अरे में डाला, इधर मैंने प्रिंट किया, राइट. एंड इफ यू लुक एट द पर्टिकुलर व्यू सोर्स, देखो इसमें तो एल आई करके वेरी तो जावा कोड है ही नहीं, राइट. दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी मच डिफरेंस. ये बहुत डिफरेंस है. मैंने ये सब सिलेक्ट किया, आई गॉट इट एवरीथिंग, राइट. इफ आई डिसेलेक्ट इट आई वांट ओनली वन. तो दिस इज वेरी. और कितना फास्ट है, देखो कितना फास्ट है. व्हाई इट इज फास्ट, यू नो, एवरीथिंग इज प्री कंपाइल्ड. एक बार आपका क्लास कोड बन गया ना सर्वलेट में और सर्वर में, एक बार आपका क्लास कोड बन गया ना तो आपको बार बार सर्वलेट जनरेट करने का जरूरत नहीं है. तो ओनली एचटीएमएल से खेलो, फटाफट कॉल होगा. ओनली वंस, एक फर्स्ट टाइम पे आपको 1 मिनट लगेगा. आफ्टर दैट विदिन अ फटाक क्लिक you will get a result, right. then there is something called, see आप प्रोटोकॉल कौन सा यूज करते हैं, सर्वलेट पाथ क्या है, आपका सर्वर का नाम क्या है, सर्वर पोर्ट का नाम क्या है, कौन सा यूजर एजेंट आप इस्तेमाल करते हो, राइट. इट्स लाइक अ पीएचपी प्रोग्रामिंग, राइट, बट इट इज एक्चुअली व्हाट जावा प्रोग्रामिंग. सर्वलेट जेएसपी प्रोग्रामिंग है, पूरा जेएसपी प्रोग्रामिंग है. लेट्स रन दिस, राइट. लेट्स रन दिस 9 ब्राउजर info. Let's see this. ये पर देखो मेरा सर्वर पोर्ट किधर चालू है, मेरा सर्वर नेम क्या है ना. आई थिंक वो प्रीवियस जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था उसको ही आंसर है, राइट. यू कैन हैव योर सर्वर नेम, यू कैन हैव योर सर्वर पोर्ट, राइट. रिक्वेस्ट कौन सा दिया, यूआरएल क्या है, दिस इज योर यूआरएल. मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, उसका वर्जन क्या है, सर्वलेट पाथ क्या है. उससे सर्वलेट ना इंटरनली जावा कोड इज बीइंग जनरेटेड. तो जावा कोड है क्या, जावा कोड ही अपना सर्वलेट है ना. and the browser I am using, actually by the way I am using the Brave browser, right. This is the Brave browser. This Brave browser is purely written in JavaScript. JavaScript अलग है, this Java बहुत डिफरेंस है. JavaScript आपने Node.js, Express.js इसका नाम सुना रहेगा. तो वो जो JS है, JS JavaScript. So this Brave browser, only one browser in the world which is totally written in JavaScript is called as Brave browser, right. ध्यान में रखो. If you want to have the many projects, then you use Brave browser. Brave browser इंस्टॉल करो. जैसे मेरे पास Brave browser है, right. इंटरनेट एक्सप्लोरर है. Now this is Mozilla, Firefox.
बट ब्रेव ब्राउजर इज देयर। जो भी जावास्क्रिप्ट में जो नया आता है, दुनिया में जो नया आता है फंक्शनैलिटी जो भी आता है, तो पहला ब्रेव ब्राउजर पहले उसको एक्सेप्ट करता है, देन फायरफॉक्स, देन यूर क्रोम, देन यूर क्रोम में भी अलग अलग वर्जन है ना, लेकिन ब्रेव ब्राउजर अंडरस्टैंड दिस, ओके, इट्स अ न्यू थिंग, ओके। देन दिस इज अ मेथड डिस्प्ले, हाउ कैन यू राइट अ मेथड, तो जावा ही है, तो जावा जैसे ही काम करेगा, दूसरा है ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल वन। तो एग्जांपल दिया है, हाउ यू विल गेट यूजर इंफॉर्मेशन, ये यूजर इंफॉर्मेशन आपको इधर कैसे मिलेगा, राइट। So let's say user info one.html, user info one.html, 11 है, 11 is the first number। मतलब आप बोलोगे सर क्या कैसे डिजाइनिंग किया है, यू डिजाइन इट ना अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, बूटस्ट्रैप यूज करो, बैकग्राउंड डालो, कैसे दिखेगा कैसे नहीं दिखेगा, लुक एंड फील, व्हाटएवर यू डू इट ना, it is your job, my job is to view the technical things, right? So here I write Yogesh, then birthday I have written, you here you can able to write what the date picker करके आप लिख सकते हो। ये तो मैंने ऐसे सैंपल कोड लिखा है, एकदम वेरी सैंपल कोड, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, जस्ट एक सैंपल लिखने के लिए, लकी नंबर, व्हाट आई वांट टू शो कि जो मैं पैरामीटर दे रहा हूँ तो इधर जा रहा है क्या आ रहा है क्या, ऐसा, दैट इज व्हाट इज नीडेड, राइट। ये देखो अभी नेम नेम लिखा है गलती से, तो आप बोलोगे सर नेम कैसे आ गया, राइट, बट आई एम हैविंग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, तो लिखा कैसे है, राइट, लिस्ट में आप जावा कोड कैसे लिखते हैं, हाउ कैन यू प्रिंट द वेरिएबल्स लाइक दैट, राइट। और नाउ यू कैन जस्ट सी यूजर इन्फो वन डॉट जेएसपी ना, अभी अगर आप इसका भी कोड देखोगे तो आपको और मालूम पड़ेगा कि भाई इसके अंदर और क्या क्या हो गया है, लोकल होस्ट, राइट, कैटेगरी सैंपल, ये देखो अभी जितने मैंने प्रोग्राम रन किए हैं सबके प्रोग्राम्स, यू कैन जस्ट इमेजिन, जैसे यूजर इन्फो ना, ये देखो यूजर इन्फो मैंने अभी आपको ये कह रहा दिखाया था, जस्ट सी ये सवलेट इज बीइंग रिटन बाय द जेएसपी इंजन फॉर अस, ये जो मैंने कोड लिखा है जेएसपी डॉट जेएसपी करके सेव किया है ना, बट इंटरनली जेएसपी जावा कोड एक्चुअली जनरेट हो रहा है for all the files, whatever JSP files I am showing you, whatever JSP files I am showing you, right here you can see the bin property, Java bin, get set method, है Java bin property, अगर Java bin चुना रहेगा आपको मालूम रहेगा तो you will come to know, this is very very important, and now there is very important thing is something called as a servlet, अभी तक किसको कुछ डाउट है, अभी तक मैंने 1.5 hour and continuously speaking, so I think now you have to speak, ये आप बोलो, और बाय द वे जो भी कुछ करने का है आपको ही करने का है, यू आर गोइंग टू डिजाइन योर वेब पेज, डिजाइन योर प्रोजेक्ट, सर बोला साहेब। सर एक डाऊट होता सर, म्हणजे आपण जावा कोड जो माझ्याकडे इक्लिप्स आयडी आहे, मी त्याचे हाँ जावा कोड टाईप केला तर तो सेव डॉट जावा फाईल होते, हाँ ती म्हणजे आता तुम्ही जेएसपी आपल्याला सर्व्हरवर रन करायचं, जेएसपी फाईल कशी होईल, म्हणजे ते जरा समजलं नाही मला। नाही बघा इक्लिप्स अँड अदर नेटबीन्स इक्लिप्स हे काय आहेत, हे एडिटर्स आहेत है ना, त्याचा आणि ऍक्च्युअली मेन फाईलचे काही संबंध नाही, ते तर मॅनेज करायला आहेत, एडिटर्स मॅनेज करायला आहेत, समजलं का, कळलं, मग तुम्हाला जावा फाईल आणि जेएसपी फाईल कसं सेव्ह करायचं ते तुम्हाला पाहिजे का, हा सर, म्हणजे माझी फाईल आता जावा, आता मी कोड टाईप केला आणि सेव्ह केला तर डॉट जावा फाईल सेव्ह होईल ना, पण करेक्ट, सर्व्हर मध्ये जेव्हा आपण पाहिजे आपल्याला सर्व्हर तर डॉट जेएसपी फाईल पाहिजे तुम्ही बोलले, तर that you can write it down using only simple notepad also ना रे, why you require the other eclipse and eclipse मध्ये एक्सटेन्शन चेंज करायचं, बस डॉट जेएसपी करायचं। जेएसपी मध्ये सी डॉट जेएसपी पण तुम्ही करू शकता फाईल एक्लिप्स मध्ये, आणि जर का होत नसेल तर यू स्टिक विथ द विज्युअल स्टुडिओ कोड, विज्युअल स्टुडिओ कोड मध्ये तुला सगळंच आहे, डॉट जावा जेएसपी है ना, सगळं इव्हन इव्हन माझं फ्लटर आणि डार्ट प्रोग्रामिंग पण मी इकडेच करतो, डॉट डार्ट सगळं प्रोग्रामिंग वगैरे सगळं मी विज्युअल स्टुडिओ कोड मध्येच करतो, इट्स अ फॅन्टॅस्टिक एडिटर, एकदम मस्त एडिटर आहे आणि लाईट वेट आहे, सी इक्लिप्स नेटबीन्स आर हेवी वेट एडिटर्स, मी मगाशी तुम्हाला हेवी वेट कॉम्पोनंट्स वरनं सगळं सांगितलं, हेवी लोडेड आहेत ते, इक्लिप्स ऑन व्हायलाच बघा तुला किती वेळ लागला है ना,
त्याच्यानंतर मग तुम्ही ते त्याच्यामध्ये एक छोटासा सिम्पल प्रोग्राम करणार. सिम्पल प्रोग्राम तुम्ही कंपाईल करायला किंवा स्टोअर करायला यू विल हॅव द सराउंडिंग फाईल्स. त्याच्यामध्ये बिल्ड एक्सएमएल येतं, बिल्ड डॉट एक्सएमएल, कितीतरी एक्सएमएल फाईल्स त्याच्यामध्ये अटॅच होतात. कळलं? त्याची गरज नाही ना एवढी, त्याची गरज नाही. ठीक आहे मग सर. माझ्या माझ्या हिशोबाने व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड हे मस्त एडिटर आहे की तुमचं सगळं काम होऊन जातं फटाफट. हा सर, ते घेईल चालेल. हा म्हणजे असं मला वाटतं तुम्ही इक्लिप्स मध्ये पण ट्राय करू शकता, नाही असं नाही. अगेन आय एम टेलिंग. आणि तसंही तुम्हाला आता वेब पेज जर का प्रोग्रामिंग करत असेल तर आय थिंक व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड मध्ये तुम्ही फटाफट करा ना. त्याच्यामध्ये बूटस्ट्रॅपिंग प्रोग्रामिंग आहे, सगळं तुम्ही करू शकता ना. वेब पेज फुल टू रेडी करा. बॅकएंडला सवरेट कसं करायचं, काय कसं करायचं, आय एम हिअर टू टेल यू. सर आणि ती फाईल जी आपण सेव्ह ती जाऊन आपल्याला टॉमकॅटच्या सॅम्पल फोल्डर मध्ये पेस्ट करायला लागेल. हा, टॉमकॅट तेव्हा बघा, टॉमकॅट तुमचं असेल ना, टॉमकॅट मध्ये वेब ऍप्स मध्ये तुम्हाला नवीन फोल्डर बनवायचा. इकडे नवीन फोल्डर बनवायचं. कळलं? ओके, फॉर वेब ऍप्स एक्झाम्पल मध्ये नवीन फोल्डर मला. हा, असं फोल्डर बनवलं, तेजस प्रोजेक्ट असं बनवलं, त्याच्यामध्ये लिहायचं. त्याच्यामध्ये सगळे प्रोग्राम. जसं मी सॅम्पल नावाचं मी बनवलंय, सॅम्पल नावाचं ऑलरेडी नव्हतं हे. ओके ओके ओके. वेब ठीक आहे. मायनस आय एन एफ. वेब मायनस आय एन एफ काय आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये हे क्लासेस नावाचं काय आहे, वेब डॉट एक्सएमएल फाईल काय ना, ही स्वतः मी बनवली. ती कशी बनवली ना हे तुम्हाला सांगायचं मला. मी आता तुम्हाला सांगितलं की सगळं डोक्यावरनं जाईल. ओके सर, ठीक आहे, कळलं. सध्या मी तुम्हाला फक्त आता जेएसपी ची दुनिया दाखवली आहे की जेएसपी मध्ये किती सोपं आहे ते ऍक्च्युली जेएसपी मध्ये बनवणं आणि किती सिक्युअर आहे. तुमचा फुल टू प्रोजेक्ट, तुमचा पूर्ण प्रोजेक्ट जेएसपी मध्ये फटाकन बनवून जाईल. आजच्याच बनेल, बघा तुम्ही करून बघा. तुम्हाला एवढं तुम्हाला फक्त एकदा फक्त हे कळलं ना की बाबा मी टॉमकॅट सर्वर टाकू कसं, हे एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल कसं बनवू, हे कसं बनवू. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आय एम गोइंग टू शेअर विथ यू ऑल दिस थिंग्स. हे बघ, हे सगळं ना, हे सगळं ग्रामर आहे, हे तुम्हाला मी सगळं सांगणार आहे. म्हणजे हे मी आपल्या कुठे गीतच मध्ये टाकतो ना आम्ही, डिरेक्टिव्ह काय असतात है ना. हे बघ, हे सगळं ऍक्शन्स काय, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कुठले कुठले आहेत जेएसपी मध्ये, डिरेक्टिव्ह टॅग कुठले कुठले, एक्सप्रेशन टॅग आहे, हे ना, हे सगळे तर तुम्हाला प्रोग्राम दाखवले. एकदा हे तुम्हाला कळलं की झालं काम तुमचं. ते ऑडिट सगळं दिलेलं आहे बघा, काय काय करायचं, कुठे फोटो करायचं. कळलं? ओके सर. हा सर, ठीक आहे. तर हे तुम्हाला मी देईन ना. कळलं? याचा काहीच इश्यू नाही, हे सोपं एकदम. कारण आतापर्यंत तुम्हाला कळलं का काय काय केलं ते. आय थिंक तुमचे ना तुमचं मॅडमनी आम्हाला हे पण दिलेलं आहे, काय म्हणतात त्याला, प्रोजेक्ट ग्रुप्स आणि नावं पण दिले. लेट्स गो थ्रू इट. मला जरा बघून घेतली बाबा कोणती मुलं काय काय करतात. तुम्ही डिस्कस करा माझ्यावर, तुम्ही सांगा मला तुमचं काय हे आहे. म्हणजे मला आता लगेच समजेल की बाबा आपण जे बघतोय ना ते काय बनवतोय ना. तर मी माझ्या याच्याकडून सुरुवात करतो. हर्षल पाटील आहे का? हर्षल पाटील. येस सर. हर्षल पाटील, ध्रुवीर मेहता and मोहित वर्मा है. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you want to do the chat server using Applet, Swing or RMI, correct? Yes. So I think you can do it using Swing. Swing स्पेशली तुम्ही करू शकता. जसं मी आता मगाशी स्विंगचं सांगितलं ना, स्टार्टिंग में बोला था आपको स्विंग में कर सकते थे, तो स्विंग में करो. अदरवाइज यू मे डायरेक्टली गो फॉर द जेएसपी सर्वलेट. ब्राउजर टू ब्राउजर यू कैन टॉक and you can interact. जसं तुम्ही see like this you can make a this thing web apps. हे बघा, व्हॉट्सअप आहे ना आपलं, व्हॉट्सअप. दिस इज व्हॉट्सअप ओनली ना, व्हॉट आय ओपन ओव्हर हिअर है ना. Yes. हा, मग व्हॉट्सअप कसं बनवलंय की यू कॅन एबल टू टॉक टू एनी वन ऑफ द फ्रेंड एंड यू कैन डू इट. दिस इज वेब एप्स. ऐसा वेब एप्स आप भी बना सकते हो इन जेएसपी सोलेट. यू नीड नॉट टू स्टिक विथ द स्विंग. तर तुमच्यावरती तुम्ही सांगा मला, तुम्हाला इफ यू वॉन्ट टू अगेन स्टिक विथ द स्विंग, ऑब्वियसली आय एम गोइंग टू टीच अ स्विंग. पण स्विंग साठी पण आपल्याला एक वेगळं सेशन घ्यावं लागेल ना. तुम्ही सांगा तुम्हाला काय करावे. इट्स नॉट लाईक दॅट की तुम्ही हा प्रोजेक्टचं नाव दिलेलं आहे आणि हे दिलेलं आहे आता ते फिक्स झालं, यू कॅनॉट चेंज इट. ऐसा कुछ नहीं. आप चार्ट सर्वर ही बनाओ चलेगा, तो यूजिंग डू इट यूजिंग जेएसपी सर्वलेट. Okay, sir. Okay. See,
ऑब्वियसली वॉट एवर यू आर हैविंग द नेम्स एंड एवरीथिंग, ये जो चार्ट सर्वर है जो है ना, दो तभी मैं खुद 2000 में डिग्री पास आउट हो गया, वो टाइम पे ये चार्ट सर्वर एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी, बहुत मायने करते थे, बहुत मायने करते हैं। लेकिन अभी की दुनिया बहुत आगे चालू है ना, बहुत आगे गई है। फिर जेएसपी सोरेट आई स्टार्टेड इन 2000 2001 2002, नाउ वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ 2020, जस्ट इमॅजिन। आत्ता आत्ता कुठे जेएसपी सोरेट सिलेबस मध्ये यायला लागलाय हळूहळू, ते पण नाही आले अजून। वी आर हॅव्हिंग ओनली जावा, जावा जेव्हा पण मध्ये मध्ये जावाच नव्हता, आता त्याने जावा टाकलं, मग जेएसपी सोरेट ज्यांना येतं त्यांच्यासाठी टाकलं। यू कॅन जस्ट सी द द करिकुलम गैप, बहुत बड़ा गैप है। लोग अभी दुनिया में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, लोग अभी रिक्वायरमेंट क्या है मालूम है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क, स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क, हाइबरनेट इज अ फ्रेमवर्क, इसका डिमांड है मार्केट में, स्प्रिंग एंड हाइबरनेट इसका डिमांड है। लेकिन स्प्रिंग और हाइबरनेट में पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। यानी उसके उसके पहले आपको जेएसपी सोलर जैसा टेक्नोलॉजी उसमें हाथ हाथ बैठना चाहिए। एंड देयर इज वन मोर प्रोग्रामिंग थॉट एज स्टर्ट, स्टर्ट प्रोग्रामिंग, स्टर्ट्स प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर नहीं, ये नाम का प्रोग्रामिंग है, स्टर्ट्स प्रोग्रामिंग, ये आना चाहिए। इफ यू नो जेएसपी सोलर स्टर्ट्स एंड एवरीथिंग, देन यू कैन टॉक अबाउट स्प्रिंग। डायरेक्टली स्प्रिंग आणि हायबरनेट मोठी मोठी नावं घेतली, काही कळणार नाही तुम्हाला, काहीच कळणार नाही। आणि हे सगळं बीन्स वरती चालतं, हे सगळं ना, हे सगळं जावा बीन वरती चालतं। आणि जावा बीन नावाचा प्रकार तुमच्या सिलेबस मध्येच नाही, कोर जावा मध्ये। जस्ट सी इट, गो थ्रू युअर सिलेबस अँड जस्ट सी इट की जावा बीन आहे का तुम्हाला, नाहीच आहे। जावा बीन ऍटलीस्ट आपण आता जेएसपी सॉल्ट मध्ये लिहितोय, आपण हळूहळू लिहिणार आहोत, पण ऍटलीस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहले आपको जेएसपी आना चाहिए, उसके बाद में हम लोग सोलेट ऐड करेंगे, उसके अपने बाद में हम लोग एक छोटा सा बीन ऐड करेंगे, तब अभी आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ये ऐसा एमवीसी नाम का आर्किटेक्चर जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप पाएगा। उसकी एमवीसी आर्किटेक्चर के ऊपर ये है खड़ा है, उसके ऊपर स्प्रिंग है, उसके ऊपर हाइबरनेट है, राइट। ये सारी चीजें आती है बाद में, समजलं का? तर तुम्ही ठरवा काय करायचं ते आजच्या दिवसामध्ये, कळलं का? हर्षल पाटील, हर्षल पाटील काय कुठे गेला काय? हर्षल येस सर। आहे ना बाबा तू? Yes, sir. Yes. हाँ हाँ, तो प्लीज स्पीक है, ओके। एंड देन कुठे गेला तुमचा शिवम पाल, नमन पांडे आहे का रे? पांडे है क्या? Yes, sir. For you also, intranet mailing application. You can also do the mailing application using Java Mail API. जो Java Mail API, you can add it in JSP Solid again. तो JSP Solid से additionच येते, पण at least front page to design फटाफट बनवू शकतात ना। See, mailing application is like this. It's like a Java Mail API, है ना? आणि हे जीमेलच आहे, पण जीमेल हे बनवलं कशामध्ये, तशाच टेक्नॉलॉजी मध्ये बनवलंय ना। So like this application, you can make it very easily. At least you can, at this moment, you can able to design the pages. Designing of pages should be very important. फटाफट बनवू शकत तुम्ही, राईट। नंतर साहिल पाटील आहेत का? साहिल पाटील, अंकित कोरगावकर, हा सर, येस सर। तर तुम्ही तर स्पेशली वर्कशॉप रिलेटेड इन्फो फॉर स्टाफ वगैरे म्हणतात ना। सी इट्स अ जेएसपी सोलेट ओनली, फटाक से बना सकते हैं। नंतर इन्शा पण आहे, डॉक्टर फॉर्म इंटरनेट चैटिंग एप्लीकेशन यूजिंग जेएमएस, जावा मैसेजिंग सर्विसेज ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। अभी जावा मैसेजिंग सर्विसेज का भी बहुत जमाना हो गया, नाउ पीपल आर यूजिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जसं व्हॉट्सअप आलं, सगळं चॅटिंग, तर ते सगळं जमानाच निघून गेला। नाउ लॉट ऑफ थिंग्स आर अहेड विथ दिस, खूपच आगे गया है, ये बहुत जुना स्टाइल है, राइट। Sir, हाँ बोला, कौन बोलते हैं? sir, Isha. आयशा, Sir, for Proctor बोल form ना। we have to use web development. हाँ, तर काय प्रॉक्टर फॉर्म वेब डेव्हलपमेंटच आहे ना। हाँ. प्रॉक्टर फॉर्म म्हणजे काय, यू हॅव टू एंटर द इन्फॉर्मेशन ना अबाउट स्टुडंट, फोटो इन्क्लूड करायचा आहे, देन यू विल हॅव व्हॉट प्रॉक्टर फॉर्म, यू हॅव रिटर्न द प्रॉक्टर फॉर्म ना। मी नाही का तुम्हाला फर्स्ट इयरला दिलेले प्रॉक्टर फॉर्म है ना, हो सर, हो मैंने तेच आपको सांगते बांटा था मी। प्रॉक्टर फॉर्म। हम प्रॉक्टर फॉर्म जो 4 पेज का है ना, वही 4 पेज को हम लोग को वेब पेज में कन्वर्ट करने का है। उसके अंदर जेएसपी का यू कैन एबल टू ऐड, मॉडिफाई, डिलीट,
the form using JSP. And there will be the contact us form, there will be membership form, there is the sign up form. हे सगळं आहे ना त्याच्यामध्ये. हे सगळ्याला सेमच आहे. वर्कशॉप सर म्हणा किंवा एक्झामिनेशन सिस्टीम म्हणा किंवा सेलिंग होम फॉर्म म्हणा, करिअर गायडन्स किंवा काही दुसरं आहे, पण काही म्हणा त्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजी सेमच आहे ना, फक्त नावं चेंज फील्डची नावं वेगळी, बाकी अदरवाईज एव्हरीथिंग इज सेम. बोला कोण सर बोलतोय? सर साहिल सर, आमचा जो टॉपिक आहे त्याच्यात ऍप लिहिलंय, तर मग आपल्याला वेब पेज बनवायचं की मोबाईल ऍप्लिकेशन बनवायचं? अरे कुठलं मोबाईल नको बोलू, वेब बनव. वेब हा, ते ॲप मी आता तिकडे ऍप लिहिलंय मग मी बोललो. नाही नाही नाही, हे सगळं हा. तुम्ही वेब ॲपच बनवा, सगळी मुलं, कळलं का नाही? फॉलो वन टेक्नॉलॉजी, मग एक दुसऱ्याची हेल्प पण घेता येईल, समजलं का नाही? फॉर एग्जाम्पल इंशा ने कुछ अच्छा किया काम, तो इंशा कैन टेक अ हेल्प, सॉरी साहिल कैन टेक अ हेल्प ऑफ इंशा, और यू नो द हर्षिल पाटिल कैन टेक अ हेल्प ऑफ साहिल, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर युजिंग ओनली वन प्लॅटफॉर्म. हे सगळ्या बोलायच्या गोष्टी आहेत मोठ्या मोठ्या, कळलं का नाही? जावा मेल ना हे ते वगैरे ते जमणार तर काहीच नाही, कळलं का? हॅलो. हा सर, ओके सर. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सी, इफ आय वुड हॅव बीन स्टार्टेड विथ दिस राईट फ्रॉम बिगिनिंग, जर का मी तुम्हाला एकदम जून जुलै पासून जेव्हा कॉलेज सुरू झालं तेव्हा तुम्हाला मी ऍप्लेट स्विंग किंवा जावा मेल एपीआय किंवा JMS वगैरे शिकवलं असतं, ते पुढे मेक सेन्स ना. आता तुम्हाला मी शिकवणार कधी, तुम्ही करणार कधी, समजलं का? हो सर. टाइम रिस्ट्रिक्शन आहे, म्हणून एवढं लक्षात ठेवा. आता हे झालं, आता हे तुमचे 3 ग्रुप, सी वेब ॲप स्टोर, ऍप म्हणजे वेब ॲप आहे ना. येस सर. हे पण बिल्डिंग वर व्हेरियस चार्ट्स युजिंग स्विंग. आता हे जे आहे ना, स्विंग मध्ये चार्ट्स वगैरे तुम्हाला खूप चांगलं होतं, किंवा बघा नेटवर्क पॅकेट स्निफर युजिंग स्विंग ना, हे तुम्ही याच्यावर करू शकता. अदरवाइज सिद्धांत यू कॅन स्टिक विथ द JSP ऑल्सो ना. JSP मध्ये पॅकेट स्निफरचं एकदम जबरदस्त आहे. यू विल गेट ऑल आय एम टेलिंग यू, एव्हरीथिंग इज बेस्ड ऑन द वेब टेक्नॉलॉजी, हे लक्षात घ्या, कळलं? तसं इफ इफ टाइम परमिट्स आय विल टॉक ऑन स्विंग ऑल्सो. पण स्विंग करण्याचे पहिल्यांदा मला तुम्हाला आय हॅव टू टीच यू सवरेट ऑल्सो ना. आता मी एवढं सगळं एक 5-5, 6-6 तास तुमचं वर्कशॉप नाही घेऊ शकत, राईट? सो टुडे आय टॉक विथ ओनली JSP. JSPचं फुल तुम्हाला आता मी सगळं सांगितलं की काय करायचं काय नाही. सो यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन JSP, राईट? JSP मध्ये कॉन्सन्ट्रेट करा, डिझाईन युअर वेब पेजेस, फटाफट वेब पेज बनवा पहिले, टॉमकॅट सर्व्हर तुमच्या सिस्टम मध्ये इन्स्टॉल करा, वेब ॲप्स मध्ये डिरेक्टरी बनवा, त्या डिरेक्टरीमध्ये सगळे पेजेस .JSP म्हणून सेव्ह करा, कळलं? किंवा .html ते HTML, समज इफ जावा कोड इज रिक्वायर्ड फॉर दॅट पेज, यू राईट ओव्हर देअर, कळलं का नाही? .JSP, अदरवाइज .JSP सेव्ह करा, .html सेव्ह करा. अँड वन्स आय विल टेल यू गेट पॅरामीटर, तुम्हाला सांगितलेलं आहे हाऊ कॅन यू गेट अ पॅरामीटर. Now, do you know how to use JavaScript in the program? JavaScript, CSS, HTML येतं का तुम्हाला? पहिले ते सांगा मला. नाही सर. हा? नाही नाही. सर. HTML नाही तुम्हाला? वेब नाही टेक्नॉलॉजी सर, येतच नाही तुला? नाही येत. अच्छा. Anybody else? Yes, sir. I know. सबका सेम फीडबॅक आहे की, सी आय थिंक मुझे लगता है की साहिल पाटीलला याला 12वीला नव्हतं म्हणून येत नाही का तुला, साहिल? हो सर, मला नव्हतं हे काही, माझा सब्जेक्टच नव्हता काय असं. ओके, अशी किती मुलं आहेत की ज्यांना वेब टेक्नॉलॉजी माहित नाही, HTML वगैरे काहीच माहित नाही? सर मला पण नाही माहिती. 2 झाले. अजून? मला पण नाही. ओके, 3 नंतर. सर मला पण. मी काय तुम्हाला क्वेश्चन नाही विचारणार आहे, यू डोंट वरी अबाउट इट, इवन दो द पीपल सर विल मला नॉट पण. टॉक. इवन दो द पीपल विल नॉट टॉक, राईट? सो फॉर ऑल ऑफ यू आय एम गिविंग यू द मेडिसिन. गो टू द schools.com, w3schools.com माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना? हे माहित नसेल तर तुम्ही प्लीज गो थ्रू इट. आय विल पुट इट इन द चॅट बॉक्स. मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकतो, w3schools.com. Please visit this w3schools.com. Please visit this particular w3schools.com. Right? What you do? तुम्हाला मी सांगतो मी काय करायचं. ज्यांना काही येत नाही किंवा ज्यांना येतं त्यांनाही काही येत नसेल असं पकडून चालूया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what you do, you
install Visual Studio Code. पहले install करा. Second thing, there is something called as HTML5 and there is something called as CSS3 and there is something called as JavaScript. या तीन गोष्टी, 3 things that you should know it to design a web page. बरोबर आहे. Now for this you visit this particular first w3schools.com, right? And over here you can look at the tutorials की तुम्हाला याच्यामध्ये काय पाहिजे. You are going to design the page using HTML. HTML चं पेज डिझाईन करायचं आहे. तर हे माझं पेज असतं. For example, if I go to the this particular thing, let's say sample मध्येच not in classes, sample मध्येच मी एक फाईल बनवली क्लासेस मध्ये इकडे एक फाईल बनवली क्लासेस मध्ये राईट. ओके, आपण एक नवीनच सगळं बनवूया. सपोज टेस्ट इज माय न्यू फोल्डर. ओके, आणि इकडे मी नवीन फाईल बनवली. त्या नवीन फाईलचं नाव आहे लेट्स से sample1.html. हे माझं फाईलचं नाव आहे. बरोबर आहे. आता अभी नाव आफ्टर दिस इफ आय पुट लाईक दिस, आपल्या हे आलं कसं माहिती आहे का, हे व्हिज्युअल स्टुडिओ कोडचं हे आहे. सपोज आय पुट एक्सक्लेमेशन मार्क, राईट, अँड देर इज समथिंग कॉल्ड एज एमिट ॲब्रिव्हिएशन, राईट. सो ते केलं तर तुम्हाला डायरेक्टली ही बॉडी तयार होते तुमची, राईट. अँड इनसाइड अ बॉडी you may write down the code. For example, if I want to say h1, right, h1, then h1 च्या आतमध्ये मी दिलं this is the heading, hello, right, hello world. Okay, and if I save this, फक्त आता हे कॉल कुठून करायचं माहिती आहे. You have to call it using this, right, using this. So here I am going to call this test and sample1.html, right. So hello world. Okay, then like this there are 6 heading tags, right. There are 6 heading tags. h1 आहे, h2 आहे, right. Like this there are 6 heading tags. Okay, जसं तुम्ही बघत जाल you will come to know h1, h3, h4, h5, h6, right. Now there is something called as table tag, right. Table tag. Now inside a table tag there is something called as tr म्हणजे रो, कळलं. आणि एका रो मध्ये असते टीडी म्हणजे टेबल डेटा, टीडी म्हणजे टेबल डेटा. ओके, त्या टेबल डेटा मध्ये असतं आपलं. फॉर एक्झाम्पल आपण आता हे बनवूया युजर नेम, राईट. आपल्याला लॉग इन फॉर्म बनवायचा आहे टेबल मध्ये, राईट. अँड इनसाइड अ युजर नेम आय हॅव टू पुट अ टेक्स्ट बॉक्स. सो इनपुट राईट इक्वल टू टेक्स्ट, राईट. नेम, या टेक्स्ट बॉक्सचं नाव काय असेल, यू नेम, right. And you have to complete it using input, right, or you may complete it over here. जसं तुमचं काय हे आहे, you can check it with like this. Okay, now save this and I just see username text box. मला टेक्स्ट बॉक्स आलं. तसं मला दुसऱ्या रो मध्ये टाकायचं आहे पासवर्ड. then you can put it like this, password type equal to, I will say password, because whatever I will write it, it will be in dot आणि इकडे टेक्स्ट मध्ये दिसणार. मेक सेन्स. सपोज आता मला हे सेंटर मध्ये टाकायचं आहे, आय विल से सेंटर टॅग. आय विल कम्प्लीट इट ओव्हर हिअर. टेबलच्या नंतर मी कम्प्लीट करेल आणि इफ आय रन इट, इट विल कम इट इन द सेंटर. Then I want, let's say, 2 buttons, tr मी कॉपी करेल. 2 buttons. Here I will say input type equal to submit. सबमिट नावाचा टाईप असतो, कळलं. त्याचं नेम म्हणजे
So value is value. What is value? Value submit. What I want to look at in the particular statement submit. जसं submit आहे तसंच there is one more button called as reset. So there are two buttons. I will say reset, and over here I will reset. Okay. So like this. So I want to fill this. I fill this, and I will click it. Now you can just see this form, login form. If I want to create it, how much time it will take? How much time it takes? Only 1 minute hardly. So Mala, even if I am learning first time, this learning of HTML is very very simple. It's very very simple, right? ये तो आपको मालूम पड़ता है, right? Even in 8, 9, 10 standard students, even though they don't have the details, the syllabus in of HTML like this in their syllabus, still they are designing the website. वेबसाईट डिझाईन करतात कळलं. त्याच्यामुळे आपल्याला वेबसाईट हा जो प्रकार आहे तो आपल्याला स्वतःहून काहीतरी इनिशियल घेऊन शिकावं लागणार. कळलं, काहीतरी इनिशियल घेऊन शिकावं लागणार. अदरवाईज इट विल यू हॅव टू स्ट्रगल अ लॉट. खूपच तुम्हाला स्ट्रगल करावं लागेल. कळलं. त्याच्याऐवजी माझ्या हिशोबाने तुम्ही तुमच्या हिशोबाने स्टेप बाय स्टेप पुढे जाल ना तर मला वाटते बरं पडेल. कळलं का. So those who don't have any kind of background of HTML, right, but they have got a background of C++. पर मला वाटते माझ्या हिशोबाने बॅकग्राऊंड आहे, म्हणजे दे आर नोईंग व्हॉट इज प्रोग्राम, व्हॉट इज कंपायलेशन प्रोसेस, व्हॉट इज एक्झिक्युशन प्रोसेस. एवढं माहिती आहे तुम्हाला की मुलांनी नाही म्हटलं ते. हा सर, येस. हा, मग आपल्यासाठी सी दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. HTML is a designing language. HTML ही डिझायनिंग आहे. By the way, it's not a language also. It's a scripting. Designing scripting आहे ते. The designing scripting साठी I think you can go through the first of all the web w3schools.com. याच्यामध्ये तुम्ही जा, बघा कसं एकदम सिम्पल असतं. नो ट्राय युअर सेल्फ. सी दिस. कळलं. आता पॅराग्राफ आहे. सपोज इफ आय राईट हिअर H2, जसं H2 आहे, काहीतरी लिहिलं मी H2 कम्प्लीटेड. रन करून बघा कसं दिसतं. सी दिस इज हाऊ यू विल गेट. सो ऍटलीस्ट फ्रॉम धिस यू विल कम टू नो ना की बाबा HTML चालतंय कसं. राईट. मला CSS टाकायचं HTML, तर मग कसं टाकू मी समजा. आणि इट्स अ बेसिक थिंग ना, हे एकदम सिम्पल आहे. म्हणजे याच्यामध्ये असं काय रॉकेट सायन्स काही नाही. बघा, मला ब्ल्यू कलर मध्ये द्यायचं तर ब्ल्यू कलर साठी मला हे असं लिहावं लागतं. रेड कलर मध्ये द्यायचं तर मला हे असं स्टाईल लिहावं लागते. कळलं. दिस इज लाईक सेल्फ लर्निंग. एवढं तर तुम्हाला सेल्फ लर्निंग थोडं तरी करावंच लागेल तुम्हाला. अदरवाईज ते डिफिकल्ट होऊन जाईल, फार डिफिकल्ट होऊन जाईल. कळलं. जावामध्ये भयंकर डिफिकल्ट आहे. याच्यामध्ये खूपच सोपं आहे म्हणून तुम्हाला मी HTML मध्ये सांगतो. Even though if you are looking at from your side it's very difficult, then we will stick with Java only. पण Java मध्ये तुम्हाला मिनी प्रोजेक्ट हा जो प्रकार आहे तो मिनी होणारच नाही तुमचा. फक्त एक्सपेरिमेंट होऊन जाईल, छोटस एक्सपेरिमेंट होऊन जाईल तुमचा. एक्सपेरिमेंट इज लाईक दिस दॅट यू कनेक्टेड टू द JDBC अँड स्टोर इट इन अ डेटाबेस. बस एवढा तुमचा प्रोजेक्ट होऊन जाईल. बट दॅट प्रोजेक्ट इज नॉट कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट ना. काहीतरी तुम्हाला दाखवायला पाहिजे का नाही. तर माझ्या हिशोबाने तुम्ही एकदा गो थ्रू करा. एकदा तरी गो थ्रू करा की बाबा हे काय आहे. इनपुट टाइप्स मी तुम्हाला आता सांगितलं बघा. लेबल, टेक्स्ट एरिया असे आहेत. तुम्ही करून बघू शकतात ना. ट्राय युअर सेल्फ. टेक्स्ट बॉक्स आलं कसं, असं आलं. मी कसं केलंय. यू जस्ट लुक ॲट दिस कोड इटसेल्फ टेल यू व्हॉट इट इज रिटन ओव्हर देयर. राईट. सो इट्स सो सिम्पल वन. व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से. लेबल दिलेलं आहे. लेबल प्रकार आणि मला कॉम्बो बॉक्स टाकायचा आहे. सपोज आय वांट टू पुट अ कॉम्बो बॉक्स. देयर इज अ ऑप्शन व्हॅल्यू ना. तो ट्राय ऑल्सो. जस्ट चेक इट. सी जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं ना कॉम्बो बॉक्स. आय पुट इट इन माय कोड. राईट. Now if I submit the query, then what should happen? See, so then you have received the car. So त्यांनी PHP दिलेलं आहे. आपल्याला JSP लिहायचं. That's it. कळलं. JSP तर मला मी 1 by 1 शिकवतोच आहे ना. पण HTML ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या ज्या थोड्या बहुत गोष्टी आहेत. सी तुम्ही काय करा पहिले. व्हॉट यू डू, यू टेक अ पेपर. पेपरवरती पहिले ड्रॉ करा. हाऊ द फॉर्म विल लुक लाईक. त्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला असं वाटलं की नाही मला हा कॉम्बो बॉक्स पाहिजे, मला डेट पाहिजे, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, रेडिओ बटन्स पाहिजे. सपोज देयर इज अ जेंडर मेल फिमेल. सो आय वॉन्ट रेडिओ बटन. कळलं. सी ऍक्च्युअली मेंबरशिप फॉर्म जो आहे ना, मेंबरशिप फॉर्म प्रकार हा तुम्ही सगळीकडे बोलता. राईट. सपोज आय वॉन्ट टू मेक अ
open the account of Gmail. So what you do, you open the sign up form ना. Sign up form तर तुम्ही सगळीकडे भरतात का नाही? Sign up form, there's a lot of sign up forms are there, right? So sign up form असतो कसा? Sign up form याच्यामध्ये तुम्ही don't look at it. See, sign up form मध्ये there is a two buttons, two text boxes. One is this thing like काय बोलते, right? Your check box असतं, radio buttons असतात, कळलं? See this असे फॉर्म्स असतात, right? Look at this form. हा फॉर्म बनवला कसा आहे त्यांनी, right? And there are a lot of tools available how to create, design this form. तो असा तुम्ही फॉर्म आहे ना, तुमचा प्रोजेक्टचा, तुमचा मिनी प्रोजेक्टचा फॉर्म कसा दिसेल? त्याच्यामध्ये टेक्स्ट बॉक्स पाहिजे का, कॉम्बो बॉक्स पाहिजे का, रेडिओ बटन पाहिजे का, काय पाहिजे? ऍटलीस्ट ते तरी ड्रॉ करू शकता तुम्ही. येस, टेल मी. हॅलो, Yes, sir. माझ्या Yes, sir. हिशोबाने हा, आय थिंक दिस पीपल शुड टॉक. माझ्या हिशोबाने यू ऍटलीस्ट यू डिझाइन द पेज डिझाइन करा. सी, वी आर नाउ इन इंजिनिअरिंग फील्ड. आपण प्रोफेशनल कोर्स मध्ये आलेलो आहे, राईट? वी आर नॉट अ स्मॉल किड. वी आर at each point, right? You have to you have to pick up, or you have to just take a finger of teacher and then you go ahead. Not like that, right? You are now becoming an engineer. So engineer मध्ये कसं असतं माहिती आहे? It's a 60-40 रेशो असं असतं ऍक्च्युली. 60% डिलिव्हरी आणि 40% ऍक्च्युली. वन्स आय वॉज देअर इन व्हिजिटीआय. व्हिजिटीआय मध्ये तर प्रोफेसरच येत नाहीत, बाय द वे. प्रोफेसर, दे आर जस्ट गायडिंग यू, असं करा बस, दॅट्स इट. And the student's responsibility to get everything from his side, right? But over here we are not going to do it. Obviously, don't worry about it. I'm here. I'm 24/7 over here. That's why I take a responsibility to deliver you everything, right? So from my point of view, I'm telling you, I'm extreme side. I will code for you at that certain end if you stuck somewhere. Are you getting it? It doesn't mean that I will do the project for you. कळलं? आप अटक गए तो मैं सॉल्व करूंगा, राइट? और जितना मैंने बोला है उतना नेक्स्ट टाइम पे आप काम करके आ जाओ. काम करना इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक मैंने आपको पहले टॉमकैट सर्वर B2 बैच को सिखाया. तो B2 बैच में कितने जन ने टॉमकैट सर्वर आपके सिस्टम में डाला? जस्ट टेल मी. राइट इन चैट बॉक्स. जिसने डाला, राइट इन चैट बॉक्स. इंस्टॉल करके देखो. Insha, if you are also installed, just write down. I have installed Tomcat server at my PC. See, so there is no one. कहने का मतलब ऐसा है कि सिखाने के लिए I installed yesterday. Very nice, right? उसका मतलब ऐसा हो गया ना. सी, 100% जो B2 बैच को मैंने सिखाया कि टॉमकैट सर्वर कैसे करने हैं, अभी आज का तो देखते पूरा रिपीटेशन था, फुल रिपीटेशन. मुझे नहीं लगता है कि मैंने और नया कुछ चीजें सिखाए रहेंगे, राइट? Even though I have talked some of the programs which I have not talked earlier, but I think it's okay. ते पण ठीक है, इतना भी ये नहीं है. Are you getting it?